financial appropriation bill, all those things are we have cleared. After that, we discussed about the annual financial statement in which that flow chart diagram in which we discussed about the revenue account and the capital account of the government. In the revenue account, we have seen the revenue receipts are there and revenue expenditure is there. In the capital account, the receipts and expenditure were also there. In the revenue account, we have seen the receipt part, have the tax part and non-tax part. On the other hand, the expenditure part is there, in which the like salary, pension, subsidy, and all those things were the revenue expenditure. After that, we discussed the capital part. In capital part, there are debt receipts and non-debt receipts, and also there were the capital expenditure in which government spent its money for the capital creation. So that was the flow chart we have discussed about the annual financial statement, and it is written in the Article 112 of the Constitution of India. So that was the thing. After that, we discussed about the taxation system in the country, the direct tax and the indirect tax. In the direct tax, we discussed like the incidence and the impact both on the same person. Those are the direct taxes. And if the incidence and impact is not on the same person, then that is the indirect taxation system. Okay. Now, after that, we were discussing, we discussed the personal income tax, how it is calculated, and the security transaction tax. You can see on the screen. Then the cess and surcharges, those were the tax on tax. Then the composition of gross tax revenue in our budget. Then the ad valorem taxes and specific taxes per unit. Goods and service tax we were discussing. Okay, so we discussed a little detail about the chronology in which the GST came into existence in 2004, Vijay Kalekar Task Force. Then 11, UPA government introduced the bill but lapsed because the dissolution of the Lok Sabha. Then the NDA government, the first Modi government, introduced the bill and they passed the 101st Constitutional Amendment Act, which ultimately became the Goods and Service Tax Act. And they passed these 4 acts. We discussed, then state legislature have passed their respective state acts. And then important provisions we are going to discuss today. Yesterday it remained, a little part has remained, which we are going to discuss today. There are 2 important provisions in this act, the Article 246A, in which states have power to tax goods and services. Both we discussed it yesterday, that before the introduction of the GST, states did not have power to tax the services. Only central government was usually coming up with the service tax. So this new power have been given to the state government to tax the services. And Article 279A also inducted in the Constitution of India, in which the President of India will appoint a GST Council headed by the Union Finance Minister. The GST, what is GST Council? We discussed it. GST Council is written under Article 279A. That's why it is a constitutional body, and the President will form it. Okay, and it was also written that within 60 days of passing of the GST Act, President need to form the GST Council. Its chairman is Union Finance Minister. Okay, and nominated by other members can be nominated by the ministers. Every state government have their representative in the GST Council. So GST Council is a constitutional body. It is a very important body because it takes decision on the the tax rates on the commodities, like which commodity will come under which tax bracket. It will be decided by the GST Council. So it is a very important body as far as the GST and the indirect tax is concerned. So the council is devised in such a way that the center will have 1/3 voting power. Okay, and the states will have 2/3 voting power. This is the voting power, and the decisions are taken by 3/4 majority, means 75% people will give consent on a particular provision, then provision or the resolution, then that will be finalized. The quorum of meeting is 50%. And yesterday we were discussing about the meetings of GST Council. So it depends on a general custom is that quarterly the GST Council meeting will held. Okay, GST Council meetings will held quarterly. It is a general custom. But GST Council meeting can be called by the Ministry of Finance anytime, whenever they felt the need to call the meeting and the scenario, macroeconomic scenario in the country that GST or the indirect taxes are supposed to be changed. In that case, they can call any emergency meeting. Okay, so till now, I think recently 48th meeting has been held. 48th. Okay.
So quorum is 50%. So every state have their delegates in the their representative in the GST Council, and the central government have their representative. Central government's voting power is 1/3, and the state government's voting power is 2/3 collectively. Now, yes, the GST rates should be mutually decided. The CGST, central GST, what would be the rate? Central GST or rate of central GST, the state GST and the IGST are levied at the rate to be mutually agreed upon by center and the state. So in GST Council, all the states and center will meet and they will decide mutually that what would be the GST rates. Okay. So what would be CGST, SGST and IGST? Okay, so mutually it will be decided. एक किसी एक स्टेट की बात नहीं मानी जाएगी और नहीं सेंटर की बात मानी जाएगी. So the rates will be decided by the 75% majority. In this scene, we can, in this slide, we can see that decisions are taken by the 3/4 majority. So at least 75% of the members of the council must give their consent to a particular resolution. Then that will be finalized. So rates, the finalization of rates, GST tax rates and the commodities will come in which bracket is decided by the GST Council. So this is what GST Council do. Okay. So that is the thing GST Council do. Wait. So that is mutually decided. GST rates are mutually decided by all these things. The rates are notified on the recommendation of GST Council. Okay, GST Council will recommend and then the notification will come. Multiple rate system. Now understanding. Initially, GST was levied at 4 rates. Initially, the first time when GST introduced after the Act, there were 4 rate systems: the 5%, 12%, 16%, and 28%. The 4 rates were there. The schedule or list of items that would fall under these multiple slabs are worked out by the GST Council. Okay, this is really important. The schedule or the list of items that would fall under these multiple slabs are worked out by the GST Council. Okay, so GST Council is really very important body as far as the when the indirect tax of the countries are concerned. So functions of GST Council: make list of indirect taxes, cess, surcharge of the union and states to be subsumed under the GST regime. Okay, so all the taxes, like there were so many taxes were there before the introduction of GST. So all those taxes are going to be subsumed or converged in some GST system. So like वो कौन-कौन से taxes होंगे, what are those taxes which are going to subsumed, which will be decided by the GST Council. Okay, first thing. Second is the decide the date from which the crude oil, petrol, diesel, aviation, turbine fuel, LPG will put under the GST regime. Don't worry, this thing we are going to learn in our further slides. So इसके बारे में अब डिटेल में बात कर रहे हैं. So this we have discussed that what was the need for introduction of GST, because there were a multiplicity of taxes before the introduction of the GST. So those multiple taxes were, literally burden on the every stakeholder involved in this whole financial system. Okay, because there was no win-win situation for all the stakeholders, either that is government or the businesses or for people. Okay, everybody was facing some kind of trouble because multiplicity of taxes ultimately increasing the transaction cost, because every time the state is levying some tax or central is levying some tax or some other taxes are there, in that case every time the businessman need to go to some portal or some offline or online and then they have to submit that. So that ultimately increase the transaction cost and not a very conducive condition for the ease of doing business. So okay, that's why the GST came into existence, and GST is very successful model already in many of the Western countries. Okay, so we adopted this practice because this is a good practice, and this ultimately, if a good financial practice is there, and if our countries can also reap the benefit of that, then definitely we must go with that. India and all this, unity of direction came into picture, and a single market came into picture. Okay. I discussed that before GST there was a possibility that same commodity you will find different prices in different states. Okay, laptop, the example of laptop we discussed. If you are buying laptop in Delhi, state might levy some other taxes, central is levying some tax. The central tax, there is a possibility the central tax will be uniform everywhere, but state taxes will vary definitely. And if state taxes will vary, the price of the commodity will vary. So the same commodity you are buying in different states of India, you are coming across the different prices, which was a somewhere mismatch that is
from the manufacturer to the wholesaler. If wholesaler is adding just a X percentage or the X rupees value in that particular product, then only that X rupees must be taxed in that channel. Okay, rather than taxing the whole amount of that. So that would be the value added tax we discussed about it, the cascading effect. So after coming of GST, the cascading effect has been finished, because value addition tax था तो VAT जैसा ही था. So every time when some supply of goods is taking place, the only tax is attracted on the value addition. Okay, at each step of the supply chain. That's why the inflationary pressure which was previously happened in the indirect tax regime before GST was not happening in the under GST regime. Okay, so that was cascading effect. Then GST input tax credit, we took a very good example, the intrastate supply of the goods and the interstate supply of the good. We discussed that if there would be intrastate supply of the good, then union will levy the central GST and the state will levy the SGST. Okay, like if in Kolkata something is produced and going to Durgapur and then Asansol, and ultimately in Asansol that product has been consumed, then that is the intrastate supply. In intrastate supply, whenever the consumption will take place, the central will levy the CGST and the state will levy the state GST. Now the interstate supply is taking place, means production is happening in Gujarat, but the consumption is happening in the West Bengal. In that case, the destination based taxation is the GST. So Gujarat, which have produced that good, won't get anything after the consumption of the product. Only the consumption is taking place in the West Bengal, so the West Bengal will get the SGST, not the Gujarat. Okay, so those states which are producing states or which have very good manufacturing base have somewhere despaired with the new taxation system. Okay, because they were not because before the GST system they were that those state governments were receiving some amount of tax, but after coming of GST, those states which are producing states and which have a good manufacturing base were not getting any tax, because GST is destination based taxation and the consumption is taking place in a particular state, only that state will get the tax. Okay, so those states who are producing state were facing some kind of trouble and they have despaired with this particular system. So they have grievances. So to redress their grievances, there is a separate mechanism which is coming in next slides. Okay, so get ready. So intrastate supply and intrastate supply. In intrastate supply, we can see the union is going to levy the IGST, and that will be again bifurcated between the CGST and the SGST, but SGST will be given to the state in which the consumption is taking place. That's it. That was the interstate and intrastate supply of goods. So how will GST would be attracted? We are aware. Now the input tax credit, which you can see on the screen, we will discuss it. Input tax credit, we will discuss a very good example of the West Bengal handicraft. That's on input wood material, Kolkata, 18% GST is attracted, and this is the company is based in the West Bengal only, and the raw material it is receiving is also coming from the Kolkata. Kolkata is in the West Bengal, means it is the intrastate supply. In intrastate supply, it would attract the CGST and SGST, and it is always 50-50. So 18% GST means CGST would be 9% and SGST would be 9%, and no IGST because it is intrastate supply. IGST would only be attracted when there would be interstate supply. Now the second input which they are purchasing is the paints from the Mumbai, which attract 24% GST, but it is coming from Mumbai, means Maharashtra, from Maharashtra to West Bengal. So this will attract the IGST, and no CGST, SGST would be there. So IGST would be 48,000. IGST would be 48,000. After that, the machine tools they are purchasing from the Rajasthan, and Rajasthan is outside West Bengal, of course. So it will also attract the IGST, which is 12%, 12,000. Okay. So total CGST, SGST, and IGST is 9,000, and the 60,000. Okay. So they purchased the 4 lakh rupees input, and they paid the 9,000 CGST, 9,000 SGST, and 60,000 of IGST. After that, after the production process, they are going to sell those products which they produced. So they are selling it. Now each product have price of 1,000 rupees, and the GST, uniform GST rate is 18%.
Now 300 items they are selling in West Bengal, means within the state in which they are producing. So 3 lakh rupees cost would be there because 300 items, 1000 will be price 3 lakh rupees. CGST and SGST it will attract because it is intrastate supply within the state. 18% GST means 9% will be CGST and 9% would be SGST. So it will attract 27,000 here, 27,000 here. Bihar and Odisha, different states will attract the IGST. So this is the thing, like we need to edit it. I haven't edited this. So this would be 5,50,000. So out of that 5,50,000 which they sold, the value they received, the CGST, SGST and IGST they received. The sell करने पे उनको जो receive हुआ, that is 27,000 and 45,000. This is the GST they received, and now we will check the net GST balance. Net GST balance would be what will be GST liability. The CGST, SGST and IGST. GST collected on output collected is 27, 27 and 45. So 27, 27 and 45. GST paid on input, which they have already paid. That is 9,000, 9,000 and 60,000. So the net balance would be minus 18 and plus 15. Okay, means in the CGST they are lacking minus. They need to pay to the government 18,000. SGST they need to pay 18,000, and IGST they are in surplus of 15,000 because they are in positive. They already paid 60,000 IGST, and the ultimate sales of that product attracted only 45,000 of the 45,000 of the IGST, but they already paid 60,000. That's why they have earned 15,000 in surplus. So this 15,000 surplus that can occur in the SGST, CGST, IGST in any of the list. Okay, but in this item they are in the surplus. So we will say that 15,000 is the input tax credit, means they are in the positive. That is input tax credit because in the input they have already paid more tax. Okay, that is called the input tax credit. The company can use this for offsetting its tax liability in the future because they already paid it. Okay, either they can take it back, or usually companies doesn't take it back because they are continuously indulged in the business process. So next time, whenever the tax GST will occur, they will offset that with the already available balance. Okay, that is we have discussed. Then now just discuss some of the advantages of GST. Advantages of GST are manifold. First is the help to create a unified common national market for India. Definitely common national market, because before that we discussed the different price for different products. So we have to create a unified common national market for India. Giving a boost to foreign investment and Make in India campaign. Definitely giving a boost, because if tax structure of the country is complicated and not easy for the people, that will ultimately impact the ease of doing business. Okay, if tax compliance is a burden on the all the stakeholders or those people who are doing business in the country, because they have to pay the GST now. So those business people will face trouble in tax compliance and all these things. So that would be, they might face tax terrorism. What is tax terrorism? We will discuss in the further slides. So it was not a good situation, or not a ease of doing business situation in India. Okay, so to increase the ease of doing business condition, it is imperative for government to come up with the unity of direction and a unified system in the taxation, indirect taxation regime. That's why the GST came. So the unification ultimately help in ease of doing business, and if there is a ease of doing business, that will ultimately attract the foreign investment. Because if someone is coming, a foreign investor will invest in a country only if they will find that this country have a very good business environment. And for having a good business environment, you need a unified taxation system. So after that, it will ultimately have some positive impact on the foreign investment in India. So this is the first thing. And Make in India campaign, definitely Make in India, because if we will see the historical aspect in our Indian economy, we can see that post 1947, when India got independence, after that it was more or less the agrarian economy. Even today India is agrarian economy, because majority of almost 50% of our workforce is indulged in the agriculture for the employment. Okay, so in the primary sector. So India's from the very beginning, India is agrarian economy. Even today India is agrarian economy. So after that, when India got independence in 1947, the primary focus of the government was
to create employment first, and second, the poverty alleviation. To alleviate the poverty, you need to secure the livelihood for the people. So that's why first 5-year plan came with the primary focus on the agriculture, so that people who are working in that sector can get some boost, and the poverty can be alleviated if they will get enough livelihood. So the 5-year plan came and all those things came, but the main focus which जो भारत का होना चाहिए था उस समय, ठीक है, वो अभी भी है, like still that trouble, India is still facing that trouble, that is the manufacturing industry. Because we will discuss about it when we study about the unemployment and all those things, that why there is a huge unemployment in India, and why the manufacturing industry, which is the labor intensive industry, is not able to grab the exact workforce and create employment. Okay, so we'll discuss about it. Why in India, for 20 to 30 years almost, India have a very good GDP growth. Okay, India had a very good GDP growth, but that was a jobless growth. We'll discuss about it. What is jobless growth? Jobless growth means the GDP is growing, means your overall income is increasing, but that is not creating jobs in the economy, because that more or less that growth is coming from the sector which is not labor intensive. There are 3 sectors we'll discuss about it: primary sector, which is agriculture; secondary sector, which is manufacturing; and tertiary sector, which is the service sector. So all 3 sectors have their own GDP contribution, and parallelly they also have their own employment generation. ठीक है, तो इसके बारे में हम डिटेल डेटा डिस्कस करेंगे रिसेंट वाला, कि how much GDP contribution they have and how much employment they are generating. All these things we'll discuss. So when we'll discuss those data, we'll came across something that is called jobless growth. Okay, jobless growth happened because growth was coming from the sector which is not labor intensive. Service sector is not labor intensive. Okay, manufacturing sector is labor intensive. Agriculture is also labor intensive, but somewhere agriculture comprises of the disguised unemployment, and agriculture is not considered as a very profitable business nowadays. So we'll discuss about it in the unemployment chapter. Here just we need to know the advantage of GST is that it ultimately helped the business to have a very good business environment. Okay, and how they will have a very good business environment? With the easy taxation system, a uniform taxation system. Okay, easy compliance, not a tax terrorism. So these things happened with the coming of the GST. So that is a really very important example. In this way, you need to analyze, you need to connect the dots, all the things, the sector of the economy you need to connect. When we will discuss about the primary, secondary, tertiary sector, that is agriculture, manufacturing and service sector, we will discuss about the GDP contribution and employment generation by those sectors. And you need to understand that every country have these 3 sectors, and every country make their planning and policies in such a way that they are able to reap the benefit of their demographic dividend. We will also discuss about demographic dividend. That's a kind of new word, don't worry. So here you need to connect the dots. Okay, like how Make in India campaign is, Make in India campaign can get benefit from the GST. Okay, because ultimately if the GST is coming into picture, there would be unity of direction, and people would able to reap the benefit of the easy tax compliance. And those people who are going to pay GST, like common man who is sitting at home, is not going to pay GST, because they don't need to go to GST portal and do all these things. No. Okay, the indirect taxes they don't have any major role to play. Okay, indirect taxes they have to pay, because we discussed about it. There's GST or the indirect tax would be attracted only when you spend your money. Direct tax would be attracted on your earning. Direct tax would be attracted on your earning. Okay. So this is the first point, the straight advantage of the GST. Am I audible ना? मेरी आवाज आ रही है आपको? Yes sir. Yes sir. Okay, तो जो समझा रहा हूँ समझ आ रहा है? Yes sir. No sir. You can have copy pen and you can write also. Sometimes I go into flow. 15-20 minute के लिए मैं रुकता नहीं हूँ, and you find any doubt you can write on a paper, and then when I stop, then you can ask me. Okay. Yes sir. The second thing is we'll mitigate the cascading of taxes. Cascading of taxes we discussed now. Okay, because it is destination based tax, and each and every stage पे value addition पे ही tax लगेगा. तो value addition पे जब tax लगेगा तो GST में भी value addition tax ही लग रहा है.
तो GST will ultimately reduce the cascading effect. Okay, will mitigate the cascading effect of taxes. Input tax credit will be available across goods and services at every stage of supply. Means if you have already paid taxes on that. Like for example, if that is happening, that in the initial stage you just you purchase 100 rupees raw material on which you have already paid tax. Okay, if you will already pay tax on input, and after that in the end of the sale you are getting some tax, but you will say that I have already paid that tax, then that will be settled in the ultimate whenever you pay the whenever you pay the GST नेटवर्क पे जाके आप जब पे करोगे तो वो सेटल हो जाएगा, बिकॉज इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल है. तो इनपुट टैक्स क्रेडिट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन द जीएसटी स्ट्रक्चर. वो समझ में आना जरूरी था. आई होप आ गया है उस एग्जांपल से. तो मिटिगेट कैस्केडिंग इफेक्ट को मिटिगेट कर रहा है. ठीक है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि यूपीएससी प्री में यू माइट केम अक्रॉस द क्वेश्चन like GST is a kind of I won't say obscure because इतना भी पुराना नहीं हुआ है, बट पॉसिबिलिटी है कि इससे क्वेश्चन अभी भी आ सकता है, बिकॉज जीएसटी से क्वेश्चन आया था जब वो इंट्रोड्यूस हुआ था. आई थिंक 17 और 18 के प्री में क्वेश्चन आया हुआ है जीएसटी से. ठीक है, और अभी वापस पॉसिबिलिटी कि आ सकता है, बिकॉज 5 ईयर 6 ईयर्स हो गए हैं उसको, तो पॉसिबिलिटी है कि यूपीएससी माइट आस्क. और ऐसा कुछ नहीं कि 5-6 साल में आए, कहीं ना कहीं अगर कोई एक रेलेवेंट टॉपिक है तो सिर्फ अब उसको ऐसा नहीं कि करंट अफेयर से ही जोड़ के चल रहे हैं, बिकॉज इट इज अ पार्ट ऑफ द टैक्सेशन सिस्टम. सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी टू चेक योर एनालिटिकल एंड कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी. UPSC might ask question like UPSC can give 4 statement and they can ask like which can be the benefit of the introduction of GST and something like that. So be very analytical about each and every term whichever you are coming across. So ultimately mitigate the cascading of the taxes. Harmonization of the law, procedure and rates of tax between central and state and across state. This happened because GST council is there. It will decide the tax rates and all those things. So unity of direction is coming, and harmonization of laws, because now laws will be made according to the procedure written in the GST Act. Improved environment for the compliance, as all returns are to be filled online. Now, post 2015-16, you can see there is a huge technical revolution after the introduction of 3G and 4G in India, and every single person have their cell phones in their hand, and the huge IT revolution happened. So IT revolution happened. That's why all the things are happening online. Before that, before the IT revolution and all those things, things were very cumbersome, because every time if you need to pay the indirect tax, you have to go to some window and filling up forms and all those paperwork, and that was really a difficult task for all the business peoples. Okay, so difficult task for all the business peoples. But today you can see that all the things are online, and it is very easy for them to file their return, GST return. Okay, wait for a moment. Wait, I'm coming back. Yes, I'm back. आवाज आ रही है? Yes, sir. Good. So the harmonization of law Yes, तो sir. वही है, बेसिक सी बात है. Improved environment for the compliance, as all returns are to be filed online, and these all things. Increase ease of doing business, it happened, we discussed it. Reduce in multiplicity of taxes, present government, ये है वही है. Final price of good is expected to be transparent due to seamless flow of input credit between manufacturer, retailer and service supplier. Means every channel, at every channel, इनपुट टैक्स क्रेडिट वुड बी अवेलेबल. ओके, देयर इज अ पॉसिबिलिटी भाई जो होलसेलर, रिटेलर, डिस्ट्रीब्यूटर है वो भी तो बीच में है ना. ठीक है, बिटवीन द प्रोड्यूसर एंड द रिटेलर, प्रोड्यूसर एंड द कंज्यूमर, देयर इज सप्लाई चेन ना. एट ईच सप्लाई चेन
there is input tax credit is available. Okay, if you have already paid tax on the previous things, then you will get back whatever जो आपका वहां पे डिफरेंस बन रहा होगा ना, वो जो हमने एक एग्जांपल देखा ना इनपुट टैक्स क्रेडिट वाला, वो एग्जांपल सारे पूरे चैनल के लिए है, ठीक है, मतलब पूरे चैनल में कहीं पर भी वो, क्योंकि होलसेलर का तो काम वहीं खत्म हो गया ना जहां से उसने डिस्ट्रीब्यूटर को दे दिया, डिस्ट्रीब्यूटर का चैनल वहीं खत्म हो गया जहां से उसने रिटेलर को दे दिया, ठीक है, तो जहां पे ट्रांजेक्शन फिनिश हो जाएगा उस पर्सन के लिए वापस वही जो है डायग्राम फॉलो होगा और उनको इनपुट टैक्स क्रेडिट जो बन रहा होगा वो मिल जाएगा, ठीक है. So that's the thing. And reduction in the price of the commodities. Definitely prices of commodity will decrease. Decrease means जो inflationary pressure आ रहा था वो नहीं आएगा. Got it? Now, those are some of the advantages of the GST. You might came across some others. You can note them down. Cascading effect, we discussed it. Yes. Now the important note. This is really important. Okay, regarding GST. So, sir, harmonization of laws. Harmonization of laws समझ में नहीं है. Harmonization of laws का मतलब है कि जब मैंने before GST, states were making their own laws. ठीक है, वो अपना खुद का नियम बना रहे थे कि उनको कौन सा इंडायरेक्ट टैक्स कैसे कलेक्ट करना है, ठीक है, उसका कंप्लायंस के लिए भी वो अपना ही कुछ बना रहे थे. तो कहीं ना कहीं हार्मोनाइजेशन नहीं था ना. सेंट्रल अलग बना रहा था, राजस्थान अलग लॉ बना रहा है, वेस्ट बंगाल अलग बना रहा है, झारखंड अलग बना रहा है. अब जब जीएसटी आ गया तो अब पहली बात तो कि टैक्स तो सारे पहले तो रिड्यूस होके काफी कम हो गए, पहली चीज. दूसरी चीज की नए लॉ जो बनने वाले उसके लिए जीएसटी के लॉ में कुछ, जीएसटी जो लॉ बना है ना पूरा 101st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, उस एक्ट में बहुत सारे प्रोविजंस है, उन्होंने बताया है, उनमें एसओपीज है, उनमें स्टैंडर्ड्स बता रखे हैं, यू नीड टू मेक लॉज इन सच ए वे, ठीक है. सो कहीं ना कहीं एक यूनिटी ऑफ डायरेक्शन आ गई ना कि पहले स्टेट अपने अपने हिसाब से करते जा रहे थे. नाउ देयर इज यूनिटी ऑफ डायरेक्शन दैट स्टेट नीड टू फॉलो अ पर्टिकुलर प्रोसीजर व्हिच इज रिटन इन द जीएसटी लॉ. ओके, तो कहीं ना कहीं जो डिफरेंट लॉज थे उन सब में हार्मोनाइजेशन आ गया कि अब हार्मनी में चलेंगे. ऐसा नहीं कि स्टेट हिमाचल प्रदेश कुछ अपना अलग कर रहा है, अरुणाचल कुछ और कर रहा है, तमिलनाडु कुछ और कर रहा है, ऐसा नहीं होगा. दिस इज कॉल्ड द हार्मोनाइजेशन ऑफ टैक्स लॉज, ठीक है. अल्टीमेटली इट इज द, यू कैन से द काइंड ऑफ, थोड़ी होमोजेनिटी आ गई, पहले हेट्रोजेनिटी थी, बहुत ज्यादा डिफरेंस था, ठीक है, इतना डिफरेंस से सब गड़बड़ा जाता था मामला. ओके, यस यूनुस ने पूछा था ये क्वेश्चन, शायद मुझे आवाज से लगा. यस सर. गुड, आई कैन रिकॉग्नाइज योर वॉइस. Cascading we discussed. Now it is really important to discuss these important notes. ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान से समझना, ठीक है, हमको थोड़ा आगे बढ़ना है आज. तो सेंट्रल सेल्स टैक्स, now listen ना, there are so many taxes before GST. There were so many taxes. So many of the taxes were either abolished. कई सारे taxes abolish कर दिए गए. There were so many taxes which were simply abolished, and there were so many taxes which are converged into some new tax. Okay, so today we are going to discuss that some important taxes which are part of the GST. Okay, and there are some taxes which are simply abolished. We will also name some of them, and there are some commodities which are still not coming under the GST regime. There are some commodities which are still not coming under the GST regime. We'll also discuss about it. Okay, so important note is that central sales tax, service tax, central excise duty. Okay, sales tax means whenever you are selling, that sales tax would attract. Service tax on the services. Central excise duty. Excise duty, what is excise duty? Excise duty क्या होती है? Excise duty is the tax a company needs to pay in order to manufacturing goods. Okay, if you want to manufacture some good, you need to pay some tax to the government. Okay, that would be the excise duty. So the central sales tax, service tax, central excise duty, except 5 hydrocarbon fuels. Except 5 hydrocarbon fuels, which is petrol, diesel, ATF means aviation turbine fuel, crude oil and LPG. These are 5 hydrocarbons. इनको इसमें से निकाल देना है इस कैटेगरी में से. तो सेंट्रल सेल्स टैक्स, सर्विस टैक्स, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, इनडायरेक्ट टैक्सेस सब्सुम्ड इन जीएसटी. मतलब इन 5 को छोड़ के, पेट्रोल, डीजल, एटीएफ, क्रूड ऑयल और एलपीजी को छोड़ के बाकी सारी जो एक्साइज ड्यूटी थी, सर्विस टैक्स था, सारा सेल्स टैक्स था, इन सबको क्या कर दिया? सब्ज्यूम कर दिया किसमें? सीजीएसटी में. Got it?
मींस अब सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी करीब करीब क्या हो गई, एबॉलिश हो गई। सर्विस टैक्स करीब करीब क्या हो गया, एबॉलिश हो गया। करीब करीब क्या, सर्विस टैक्स तो एबॉलिश ही हो गया, सेंट्रल सेल्स टैक्स भी एबॉलिश हो गया। सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी करीब करीब एबॉलिश हुई, बिकॉज इन 5 पे अभी भी क्या लग रहा है, एक्साइज ड्यूटी लग रहा है। ठीक है, सो करंटली इफ यू विल सी, ये अभी करंट स्ट्रक्चर है। करंट स्ट्रक्चर में क्या है, सेंट्रल सेल्स टैक्स कुछ नहीं होता है, सर्विस टैक्स कुछ नहीं होता है, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी कुछ नहीं होती है। होती है सिर्फ 5 चीजों के लिए। किसके लिए, पेट्रोल पे लगती है सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, डीजल पे लगती है एटीएफ, एविएशन टर्बाइन फ्यूल। एविएशन टर्बाइन फ्यूल मतलब वो जो जिससे एरोप्लेन उड़ता है। क्रूड ऑयल, कच्चा तेल जो होता है, जो आता है, एलपीजी, ठीक है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। दीज 5 hydrocarbons attract the central excise duty, okay, and the excise duty on all other things, excise duty on all other things is subsumed in the central GST, okay, central GST, got it. So there would be no excise duty. Excise duty will only be attracted for the 5 hydrocarbons. These are 5 hydrocarbons. This is the first important point. Second important point, customs duty. Second important point is customs duty. Customs duty, it occurred when there is import or export is taking place. अगर कोई commodity foreign country से इंडिया में आ रही है, तो जो पोर्ट है, जो एयरपोर्ट है, या जो भी अगर वाटर वाला पोर्ट है, तो वहां पे क्या होगा, वो जब इंडिया में एंट्री करने के लिए टैक्स लगता है, दैट इज योर कस्टम ड्यूटी। सो एक्साइज ड्यूटी हमको समझ में आ गया, सबसे बड़ा टैक्स था एक्साइज ड्यूटी। एक्साइज ड्यूटी हमको समझ में आया कि इन 5 हाइड्रोकार्बन वुड बी एक्सक्लूडेड and remaining all excise duty and these are subsumed in the CGST. CGST would be there, central GST, okay. Now customs duty. Customs duty is not replaced with GST. This is really important. Means customs duty is an indirect tax, okay. सेंट्रल सेल्स टैक्स, सर्विस टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, ये सारे क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स है। जीएसटी क्या है, एक तरीके इनडायरेक्ट टैक्स है ना, डायरेक्ट तो हो गया। इनडायरेक्ट टैक्स में हमने देखा कि सेंट्रल सेल्स टैक्स जो है, सर्विस टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, ये सबको मिक्स कर दिया, सब्ज्यूम करके क्या बना दिया, सीजीएसटी। मतलब अब इनका कोई नाम नहीं है, सब सीजीएसटी में आ गया। ठीक है, एक्साइज ड्यूटी सिर्फ इन 5 पे लगने वाली, बाकी सब पे एक्साइज ड्यूटी जो भी थी ना मैन्युफैक्चरिंग पे, वो सब इसमें आ गई, सीजीएसटी। ठीक है, तो एक्साइज ड्यूटी लगने वाली है सिर्फ 5 कमोडिटीज पे, वो इसमें मेंशन है, हाइड्रोकार्बन। अब एक और इनडायरेक्ट टैक्स आ रहा था, दैट इज कस्टम्स ड्यूटी। कस्टम ड्यूटी एक और इनडायरेक्ट टैक्स था, गुड्स पे लग रहा था। उस कस्टम ड्यूटी इज नॉट रिप्लेस्ड विद जीएसटी। दिस इज रियली इंपॉर्टेंट, कीप इन माइंड। सारे इनडायरेक्ट टैक्स रिप्लेस हो गए हैं, बट कस्टम ड्यूटी रिप्लेस नहीं हुई है। सो कस्टम ड्यूटी आज भी लग रही है, ठीक है। दैट इज इनडायरेक्ट टैक्स एंड एप्लीकेबल ऑन द गुड्स विच आर एंटरिंग इन इंडियन टेरिटरी फ्रॉम आउटसाइड। सो कस्टम्स ड्यूटी इज नॉट रिप्लेस्ड विद जीएसटी, इट इज सेपरेट फ्रॉम जीएसटी रिजीम। ये इनडायरेक्ट टैक्स है, बट ये जीएसटी रिजीम से सेपरेट है। ठीक है, हेंस इंपोर्टेड गुड्स आर सब्जेक्ट टू कस्टम ड्यूटी एंड आईजीएसटी। आईजीएसटी लगेगा बिकॉज एंटर करने के बाद ट्रेवल करेंगे, ठीक है। सो दे वुड अट्रैक्ट द कस्टम्स ड्यूटी एज वेल एज द आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड जीएसटी। सो कस्टम्स ड्यूटी इज नॉट रिप्लेस्ड, कीप इन माइंड, इट इज रियली इंपॉर्टेंट। ये जो इंपॉर्टेंट नोट है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इनडायरेक्ट टैक्सेस में जीएसटी है, और जीएसटी में काफी सारी चीजें सब्ज्यूम हो गई है। एक्साइज ड्यूटी सब्ज्यूम इन 5 के अलावा हो गई है सारी। कस्टम ड्यूटी नहीं रिप्लेस हुआ है। कस्टम ड्यूटी और आईजीएसटी जो है वो लगता है अभी भी गुड्स पे, जो बाहर से आ रहे हैं, इंपोर्टेड गुड्स। ओके, स्टेट वेट, स्टेट गवर्नमेंट एक टैक्स लगाती थी, वैल्यू एडेड टैक्स, स्टेट का जो वेट लगता था, इज रिप्लेस्ड बाय एसजीएसटी। मतलब स्टेट का जो वेट लगता था, वैल्यू एडेड टैक्स, वो रिप्लेस किससे हो गया, एसजीएसटी से हो गया, स्टेट जीएसटी से रिप्लेस हो गया। ठीक है, तो स्टेट वेट अब नहीं लग रहा है, एसजीएसटी लग रहा है, स्टेट जीएसटी। ठीक है, 3 चीज हो गई। नेक्स्ट, अल्कोहल, शराब, ठीक है, लाइफलाइन ऑफ द पीपल इन इंडिया। अल्कोहल, सिंस इंसेप्शन ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन द पावर टू टैक्स लिकर वाज विद स्टेट्स। मतलब इंसेप्शन मतलब शुरू से, फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया, द पावर टू टैक्स द लिकर वाज विद इन द फोल्ड ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। तो स्टेट्स ही टैक्स लगा रहे थे शुरू से, एंड इट कंस्टिट्यूटेड अ मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर देम। और क्योंकि बहुत ज्यादा कंजम्पशन होता है, और कंजम्पशन बहुत ज्यादा है, तो उससे रेवेन्यू भी गवर्नमेंट को अच्छा खासा मिलता है। ओके, सो दैट्स व्हाई
and it constituted a major source of revenue for them. So states were unwilling to hand it over in the GST regime. मतलब states अगर इसको भी क्या कर देते, GST regime में डाल देते, तो GST regime में डाल देते तो states को क्या दिक्कत होती? पहली दिक्कत तो ये होती कि एक तो बहुत ज्यादा रेवेन्यू इससे आ रहा है, तो गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के पास एक अच्छा खासा फाइनेंस बनता है किससे? अल्कोहल से। तो अगर वो इसको जीएसटी के डोमेन में डाल देती, तो अभी तो ये किस में आ रहा है? अभी इस पे स्टेट एक्साइज लग रहा है, ठीक है, स्टेट एक्साइज लग रहा है और स्टेट वेट लग रहा है अल्कोहल पे। तो स्टेट एक्साइज अभी लग रहा है, तो स्टेट गवर्नमेंट को एक्साइज 10% लगाना है, 20 लगाना है, 30 लगाना है, स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करती है, ठीक है। अभी उसकी रेट वो अपने हिसाब से चेंज कर सकती है, वेट की भी और एक्साइज की भी, ठीक है। तो उनको जब ज्यादा लगाना होगा ज्यादा लगा देंगे, कम लगाना होगा कम लगा देंगे, अभी उनके पास ये फ्रीडम है। बट अगर ये जीएसटी जो है, अगर ये अल्कोहल जो है, इस कमोडिटी को अगर वो जीएसटी रिजीम में ले जाते, इफ अल्कोहल वुड हैव बीन शिफ्टेड टू द जीएसटी रिजीम, देन who would have decided, मतलब कौन डिसाइड करता उस पर? डिसाइड करती कौन? जीएसटी काउंसिल करती, काउंसिल डिसाइड करती, तो स्टेट को उतना फ्रीडम नहीं रहता, फायदा नहीं रहता, वो जितना डिसाइड करती उतना करना पड़ता। तो इसीलिए उन्होंने अल्कोहल पे स्टेट्स नहीं कंसेंट दिए कि आप इसको क्या कर लो, जीएसटी फोल्ड में ले लो। तो अल्कोहल इज, even today alcohol is not in fold of GST. Alcohol still attract the state excise and state VAT, ठीक है। So states were unwilling to hand it over to the GST regime. Hence state excise on production of liquor for human consumption and state VAT on the sale of liquor for human consumption. Okay, तो excise तो मैन्युफैक्चरिंग पे अट्रैक्ट होता है और VAT अट्रैक्ट होता है वैल्यू एडिशन पे, ठीक है। तो स्टेट एक्साइज ऑन प्रोडक्शन ऑफ लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, तो प्रोडक्शन करोगे तो एक्साइज देना पड़ेगा, एंड स्टेट वेट ऑन द सेल ऑफ लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। और अगर सेल करोगे तो सप्लाई चेन में क्या अट्रैक्ट होगा? वेट अट्रैक्ट होगा। तो अभी भी स्टेट गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा जो पोर्शन ऑफ देयर एक्सचेकर, पब्लिक एक्सचेकर का पैसा है, वो आता है कहां से? अल्कोहल से, ओके, और स्टिल कम्स फ्रॉम द अल्कोहल। सो स्टेट एक्साइज और स्टेट वेट ही लगता है अभी तक भी अल्कोहल पे। अल्कोहल जीएसटी के फोल्ड में नहीं है। यहाँ आपको 5 चीजें समझ में आई होगी। देखो, पहला तो ये समझ में आया कि एक्साइज ड्यूटी सारी एबॉलिश हो गई, बट इन 5 हाइड्रोकार्बन पे नहीं हुई, ठीक है, पहला। सेकंड, कस्टम ड्यूटी जीएसटी से रिप्लेस नहीं हुई। और आ रहा है कि अल्कोहल पे अभी भी जीएसटी नहीं लग रहा। 5 हाइड्रोकार्बन कौन कौन से? पेट्रोल, डीजल, एटीएफ, क्रूड ऑयल एंड एलपीजी। स्टेट वेट ऑन देयर सेलिंग, मतलब इन 5 हाइड्रोकार्बन पे ऐसा नहीं कि टैक्स नहीं लग रहा, वो जीएसटी के फोल्ड में नहीं आ रही, तो इन पे कौन लगा रहा है? स्टेट वेट लग रहा है। क्या लग रहा है? स्टेट का वैल्यू एडेड टैक्स लग रहा है, ठीक है। Many other central indirect taxes and state indirect taxes simply abolished or subsumed in GST. उसकी लिस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है कि कौन से टैक्स सबज्यूम किए और कौन से टैक्स क्या कर दिए, एबॉलिश कर दिए, वो लिस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है। जो इंपॉर्टेंट टैक्सेस थे वो हमने कंसिडर कर लिए। तो यहाँ पे आपको 2-3 चीजें बहुत सिंपल याद रखनी है। पहला ये है कि अल्कोहल पे अभी तक भी जीएसटी नहीं लगता है, स्टेट गवर्नमेंट टैक्स लगाती है अल्कोहल पे। अल्कोहल पे सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं लगाती, स्टेट गवर्नमेंट लगाती। वेस्ट बंगाल में वेस्ट बंगाल लगाएगा, राजस्थान में राजस्थान लगाएगा, छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ लगाएगा, ओके, पहली चीज। सेकंड है, ये 5 हाइड्रोकार्बन जो है ना, 5 हाइड्रोकार्बन, पेट्रोल, डीजल, एटीएफ, क्रूड ऑयल, एलपीजी, इन 5 हाइड्रोकार्बन पे क्या लगता है? स्टेट वेट लगता है। स्टेट गवर्नमेंट अपना क्या लगाती है? वेट लगाती है। स्टेट गवर्नमेंट उस पर वेट लगा रही है, ठीक है। तो स्टेट गवर्नमेंट का एक अच्छा खासा जो है पैसा उसको इनकी कमोडिटीज की सेलिंग से मिलता है, पहला बात। तो स्टेट गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा चंक ऑफ जो मनी है जो स्टेट गवर्नमेंट को मिल रहा है, वो कहां से मिल रहा है? देखना, एक तो मिल रहा है एसजीएसटी, तो आ ही रहा है, एसजीएसटी तो सारी कमोडिटी पे लग रहा है, बट उनको एक बहुत ज्यादा पैसा अल्कोहल से मिल रहा है और इन 5 हाइड्रोकार्बन पे स्टेट वेट लगाने से मिल रहा है, ठीक है। बिकॉज पेट्रोल, विदाउट पेट्रोल यू वॉन्ट एबल टू सर्वाइव, गाड़ियां चलेगी नहीं, पेट्रोल बहुत जरूरी है। तो पेट्रोल पे अच्छा खासा टैक्स मिलता है स्टेट गवर्नमेंट को, स्टेट वेट, ठीक है। और सेकंड अल्कोहल, अल्कोहल का तो सारा ही पैसा किसको मिल रहा है? किसको मिल रहा है सारे पैसा? स्टेट गवर्नमेंट को। सो ऑल द मनी विच इज कमिंग फ्रॉम अल्कोहल इज with the state government, and these 5 hydrocarbons, the petrol, diesel, ATF, crude oil and LPG, would attract the state VAT, that is state value added tax. Okay, so this is what you need to keep in mind. And customs duty is not replaced, means custom duty is there. Okay, if some commodity is imported to India, that will attract the customs duty. Okay, and after that it will move in whichever way, that will attract the IGST. Okay, so these were 5 points which are really important. Now current GST rates and slabs. Now one more thing, the GST council will decide that when will the alcohol will come in the fold of
जीएसटी। तो एल्कोहल कब आएगा ये भी काउंसिल डिसाइड करेगी। 5 हाइड्रोकार्बन्स ये भी कब आएंगे इसके फोल्ड में, किसके, जीएसटी के फोल्ड में, ये भी कौन डिसाइड करेगा, जीएसटी काउंसिल डिसाइड करेगी। ओके, बिकॉज उसमें स्टेट्स के भी रिप्रेजेंटेटिव्स है, तो एक कॉमन कंसेंट बन जाएगा कि कब लेना है कब नहीं लेना है। ओके, now the current GST rates and slab. Abhi, what are the current slabs? The primary GST slabs for any regular taxpayers are presently pegged at 0%. First, though, there are so many commodities which attract 0% tax. Second is 5%, 12%, 18 and 28. There are 4 slabs. Okay, and all the commodities are listed in particular slab that this commodity is coming under this, this is coming under this. Okay. There are few lesser used GST rates such as 3% and 0.25. ये 3 और 0.25 ना lesser used है, rarely use होती है, GST council decide करती है. Sometimes some commodities comes in some other way around, so they just take in कि उनपे एक other different tax rate लगा दो, तो वो बहुत rarely used होता है, कोई regular इसमें commodities नहीं है. ठीक है, 15/11/2020 का ये डेटा है, means current GST rates are these, and whenever if you will appear for exam in some future date, you can update the rates. Okay, because these are variable rates, GST council can change it. Okay, 0.25 रॉफ डायमंड पे लगता है। okay, whatever are the commodities, जो 3% और 0.25 है, वो कुछ rare commodities पर ही लगता है। ठीक है, main GST rates are these 4. These are rarely used. Okay. Now understand this. What is reverse charge mechanism? The GST चल रहा है अभी ना. Reverse charge mechanism is very simple. Okay, what happened now? Normally, a seller must collect the GST from the buyer. If I am buying something, then the seller, retailer, will collect tax from me. Okay, like I am buying the phone of 100 rupees, 18% tax it is attracting. I will pay 118. So the 18 rupees is the GST which will be collected by the seller from the buyer. This is the usual practice. Okay, but sometimes what happened, if in case the buyer don't have GST number, understand this, if the buyer don't have GST number, because each and every buyer must have GST number, each and every seller, I beg your pardon, वापस word लेता हूँ मैं मेरे, I'm taking my words back. If the seller don't have GST number, because each and every shopkeeper must have the GST number. So if the seller have GST number and it is collecting the tax, then it will, what the seller will do, seller will deposit that tax in the GST network. जो भी उसका समय आएगा वो कर देगा, quarterly करना है, 6 monthly करना है, annually करना है. That's the one thing. But in case I am buying something, I am going and buying phone, and the seller don't have GST number, but I have GST number. Understand this. If seller don't have GST number, but I have GST number, then in that case, I will deposit tax money in the GST network portal. Got it? This is called reverse charge mechanism. Very simple. Normally, a seller must collect the GST tax from buyer and deposit it to government. However, if in some cases when a seller is not registered with GST number, while buyer is registered with GST number, then buyer will have to deposit tax to government. It is as simple as that. Okay? That is called reverse charge mechanism. Compensation to states. This is a very important thing, and I think last thing in the GST. Yes. ये बायर कैसे ये करेगा? बायर कैसे करेगा? जैसे सेलर करता है वैसे ही करेगा. नहीं, जैसे मतलब प्रोडक्ट बाय कर रहे हैं तब उसके मतलब उसमें लग जाएगा ऐसे. मतलब फिर से बोलो. What's your question? नहीं सर, जैसे बोल ना बायर के साइड से रहेगा तो ये कैसे होगा मतलब? देखो, यूजुअली क्या होता है, इफ यू आर गोइंग एंड बाइंग, यू आर गोइंग एंड परचेजिंग समथिंग. ओके, यू आर गोइंग एंड परचेजिंग समथिंग. आपने 10,000 रुपए का फोन खरीदा, यू डोंट हैव जीएसटी नंबर ना. आपके पास है क्या जीएसटी नंबर? मेरे पास तो नहीं है. ठीक है, बिकॉज वी आर नॉट डीलिंग विद दीज थिंग्स ना, वी आर नॉट डूइंग एनी बिजनेस, वी डोंट हैव दैट जीएसटी नंबर. बट इन केस अ पर्सन हु हैव जीएसटी नंबर, ठीक है, लाइक नॉर्मली जो कमोडिटी सेल कर रहा है उसके पास जीएसटी नंबर होगा, बट इन केस नहीं है और जो परचेस कर रहा है उसके पास है जीएसटी नंबर, बिकॉज दैट पर्सन हु इज परचेजिंग समथिंग इज इंडल्ज इन सम काइंड ऑफ बिजनेस. ठीक है, इन दैट केस जब वो अपना जीएसटी फाइल करेगा उस समय वो उसका क्या कर देगा, अपना रिटर्न फाइल कर देगा. दैट्स द थिंग. इतना ही तो है, क्या इसमें दिक्कत आ रहा है? ठीक है ना, वो अपना जीएसटी जब फाइल करेगा ना
और ये कंडीशन बहुत रेयर है पहली बात तो, क्योंकि ये कब आ रहा था ना, ये रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म का कॉन्सेप्ट आया था शुरू में, बिकॉज इनिशियली व्हेन जीएसटी केम इनटू पिक्चर एंड जीएसटी एक्ट हैज बीन पास्ड एंड ऑल द पीपल हु आर इंडल्ज्ड इन बिजनेस वर नीड टू टेक द जीएसटी नंबर। तो इनिशियली उनके पास जीएसटी नंबर था नहीं, जीएसटी नंबर लेने में बड़ी दिक्कत हो रही थी। अभी तो बहुत आसान हो गया, बिकॉज देयर आर सो मेनी प्राइवेट and the private enterprises are indulged in this. CA are there and so many people are there who can help you register for the GST network and GST number. But शुरू में बहुत दिक्कत हो रही थी, तो जिनका क्या उधर हो जा रहा था ना, तो लाइक कुछ नहीं हो उससे अच्छा कि कुछ टैक्स तो रिटर्न आए, ठीक है। अगर इनफॉर्मल में चला जाएगा, नॉन अकाउंटेबल में चला जाएगा तो डजंट वर्क ना, अच्छा नहीं रहेगा गवर्नमेंट के लिए। दैट्स व्हाई गवर्नमेंट सेड कि अगर उनके पास है तो आप रिटर्न में फाइल कर दो अपने कि हाँ इतना जीएसटी अट्रैक्ट हुआ, ये जीएसटी जमा करो। दैट इज रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। टुडे इट डोंट हैव एनी सिग्निफिकेंस, मतलब क्योंकि मोस्टली ये हो रहा है कि जो भी एंटरप्राइजेस है सबका अपना अपना क्या है, रजिस्ट्रेशन नंबर पर रजिस्टर्ड है मोस्टली, ठीक है। That's reverse charge mechanism. Now, very important thing is the compensation to states. Compensation to states. This is really important. Now, understand this. GST is a destination-based indirect tax on consumption of goods and services. We know that in which tax collect कहाँ होगा, वहाँ होगा जहाँ पे consumption हो रहा है. For the union government, largest source of tax collection were corporate tax, okay, and personal income tax. ठीक है. Largest source of tax collection is corporate and personal income tax. Both are direct taxes and therefore kept out of GST regime. They are not part of GST regime because they are direct taxes, first thing. Okay, and GST is a kind of indirect tax. For the state governments, VAT was largest source of tax income, but it is to be subsumed under GST along with other indirect taxes. Therefore, states were afraid their revenue income will decline because largest income of the central government was coming from the corporate tax first. Second is the personal income tax, because these two collectively were nothing but the direct tax. In the gross tax revenue, almost 50% tax government is receiving is coming from the direct taxes. Okay, out of that almost 31% we have seen in the previous data that 31% tax, you can see here. मेरे गाने की भी आवाज आ रही है क्या? Yes, sir. Hello. हाँ सर। I should not sing then. Okay, composition of gross tax revenue GTR. You can see that 31% of overall tax is coming from the corporate tax, and 23% almost coming from the income tax. Means a very huge chunk of tax is coming from the direct taxes, CIT and TOI. Okay, and here we can see that the customs, C is the customs. Customs duty is not subsumed in GST. That's why it is separately mentioned. Union excise duty, UED. Most of excise duties are covered in the GST, subsumed in GST, but on the 5 hydrocarbons, petrol, diesel, crude oil, LPG, and the aviation turbine fuel, those 5 hydrocarbons are not coming in the domain of the excise, domain of the GST. They still attract the excise duty. So that excise duty is written here, and remaining is the GST. So custom is written separately because custom is not subsumed. Union excise duty on 5 hydrocarbon is not subsumed. That's why written separately. GST is there. So these three are indirect tax. Corporate tax and this income tax is the direct tax. So we can see that most of the direct tax goes to whom? Direct tax goes to the central government only, because corporate tax will be attracted and levied by the central government. Income tax department works under the central government. All the tax will be collected, will be given to the central government only. In indirect tax, in GST, they might get, states will get something in terms of SGST. Okay, in customs will go to central government only. Okay, if it will attract IGST, there is a possibility state will get something. Union excise duty would be there. Only the central government will get the union excise duty. Okay, state government will attract the VAT on those 5 hydrocarbons. Okay, so here we can understand that majority of direct tax are going to the central government. So
If GST is coming into picture, then central government won't have any problem because direct taxes are not subsumed in GST, so their revenue is not going to get affected much. But there is a possibility that states' revenue will be decreased because state VAT, value added tax, is subsumed in the SGST, CGST. Okay. Yeah. So VAT was largest source of tax income, but it is to be subsumed on the GST. GST में subsumed हो गया, SGST बना दिया उसको. SGST का रेट कौन डिसाइड करेगा? GST काउंसिल करेगा. तो कहीं ना कहीं एक एप्रीहेंशन था उनमें कि भैया हमारा टैक्स कम हो जाएगा. Along with other indirect taxes, therefore states are afraid their revenue income will decline. Definitely revenue income decline होगी. Most important aspect is that GST is a destination-based tax. Therefore, industrialized states are not happy with it. Industrialized states means post-independent. In post-independent day, there were so many states who worked so much for the industrialization, and they incentivized the manufacturing industry in their state. Okay, and मैन्युफैक्चरिंग बेस बना, वहां पे एम्प्लॉयमेंट भी प्रोवाइड करी उन्होंने, सब कुछ अच्छा हो रहा है. बट सडनली जीएसटी केम. अब जीएसटी आने से उस स्टेट का जो एक उनको जो एक्साइज वगैरह मिल रहा था, जो स्टेट एक्साइज वो अट्रैक्ट करते थे, ब्ला 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 ब्ला, वो सारा क्या हो गया? सब्ज्यूम हो गया जीएसटी में. अब वो सब्ज्यूम हो गया तो वो स्टेट जिन्होंने इंडस्ट्रियलाइजेशन पे ध्यान दिया था पहले से, उन लोगों को अच्छा नहीं लगा. उनके कहा यार ऐसे तो क्या हो गया, मतलब पहले हमारे पास एक्साइज ड्यूटी का मामला था, हम स्टेट एक्साइज ले लेते थे तो हमें रेवेन्यू मिल जाता था. अब हमारा वो स्टेट एक्साइज वाला रेवेन्यू भी आपने हटा दिया, ठीक है, और कहीं ना कहीं वो भी डेट आप डिसाइड कर रहे हो SGST वगैरह की, तो हमारे को एक संकट आ गया, हमारे ऊपर एक क्राइसिस है कि हमारा रेवेन्यू क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और वो होना भी है. तो कुछ इंडस्ट्रियलाइज स्टेट के साथ ही दिक्कत हुई, तो उन्होंने कहा कि हमारे लिए आप कुछ कीजिए, ठीक है, बिकॉज. और पहली चीज. सेकंड चीज ये थी कि प्रोड्यूस तो हम कर रहे हैं, प्रोडक्शन गुजरात में हो रहा है, बट कंजम्पशन जाके हो रहा है बिहार में. तो बिहार में जब कंजम्पशन हो रहा है तो बिहार गवर्नमेंट को SGST मिल रहा है, गुजरात को तो कुछ मिल नहीं रहा है. तो कह रहे हैं कि यार प्रोडक्शन प्रोसेस पे हमने ध्यान दिया और अल्टीमेटली उसका टैक्स कौन सी गवर्नमेंट को जा रहा है? बिहार गवर्नमेंट को जा रहा है. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? कि कंज्यूमर वहां पर है, तो ये डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है. तो जो स्टेट्स इंडस्ट्रियलाइज स्टेट थे उनको क्या हुई, थोड़ी प्रॉब्लम हुई, तो उन्होंने कहा कि हमारा ध्यान दीजिए, हमारे लिए कुछ कीजिए, आपको करना चाहिए, बिकॉज नहीं तो लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं रहेगा. तो मोस्ट इंपॉर्टेंट दैट देयरफॉर इंडस्ट्रियलाइज स्टेट्स आर नॉट हैप्पी विद इट, बिकॉज a good produced in a state A, if sold in state B, then state B will get SGST and A will get nothing on consumption. ये अभी बताया, मिलेगा नहीं गुजरात को कुछ, तो उनके लिए कुछ करना चाहिए. तो फिर गवर्नमेंट ने एक एक्ट लाया, वो था जीएसटी कॉम्पनसेशन टू स्टेट्स एक्ट 2017. उन्होंने ये कहा कि हम स्टेट्स को क्या देंगे, कॉम्पनसेशन देंगे उन स्टेट्स को जिन स्टेट्स के साथ कुछ पर्टिकुलर कंडीशन फुलफिल नहीं हो पाई. वो पर्टिकुलर कंडीशन क्या है, वो इस एक्ट में है. उन्होंने पार्लियामेंट में एक्ट पास किया पूरा, ठीक है. अब वो एक्ट क्या है? जीएसटी कॉम्पनसेशन टू स्टेट्स एक्ट 2017. The percentage of annual revenue growth of a state has been projected to be 14%. If the annual growth is less than 14%, the state is entitled to receive compensation. तो पहला क्लॉज इसमें ये बोला कि अगर स्टेट का जो रेवेन्यू है, वो रेवेन्यू का जो ग्रोथ है, एनुअल रेवेन्यू ग्रोथ, अगर वो 14% सॉरी अगर वो 14% है तो वेल एंड गुड है. मतलब 14% एक एंटिसिपेशन लिया उन्होंने, फोरकास्टिंग करी कि अगर स्टेट का रेवेन्यू ग्रोथ 14% है पर एनम तो फिर वो ठीक है. बट अगर उनका रेवेन्यू ग्रोथ 14% से नीचे रह जाता है किसी भी स्टेट का, तो फिर वो स्टेट जो है एंटाइटल्ड टू रिसीव क्या है, कॉम्पनसेशन है. मतलब उस स्टेट को फिर कॉम्पनसेशन देना पड़ेगा, ठीक है. अब वो कौन देगा वो भी बता रहे हैं, ठीक है. तो फिर से समझ लो इस बात को ना, जिस स्टेट का जीएसटी लगने के बाद की बात है, अगर स्टेट का जो टोटल रेवेन्यू है उसका ग्रोथ अगर 14% है एनुअल, तो ठीक है, तो उनको कोई कॉम्पनसेशन नहीं मिलेगा. 14% एक एंटिसिपेशन है फोरकास्टिंग में. बट अगर 14% से कम रहा तो फिर उस स्टेट को क्या मिलेगा, एक कॉम्पनसेशन मिलना चाहिए, एंटाइटल्ड फॉर द कॉम्पनसेशन. The compensation payable to a state shall be provisionally calculated and released at the end of every 2-month period. मतलब हर 2 month में क्या होगा, वो उसका वो चेक करेंगे. मतलब 2 month का उन्होंने एक टाइम पीरियड रखा है कि उसको हर 2 month में क्या होगा, उसका डिफरेंस बन रहा होगा तो वो पे किया जाएगा. The generation of revenue under the act would happen through a GST compensation cess. अब ये जो compensation मिलेगा, वो compensation देगा कौन? That's the key question. Who will pay? वो पैसा आएगा कहां से,
ठीक है। तो जनरेशन ऑफ रेवेन्यू अंडर द एक्ट वुड हैपन थ्रू अ जीएसटी कॉम्पनसेशन सेस, मतलब उन्होंने उस पैसे को पे करने के लिए, फॉर एग्जाम्पल कोई स्टेट है उसका ग्रोथ 12% रह गया, 14 रहना चाहिए था, 2% कम हो गया, 2% का जो डिफरेंस बनेगा ना, जितना भी पैसा, उतना पैसा कौन पे करेगा? ये जीएसटी कॉम्पनसेशन सेस लगाया उन्होंने, एक अलग अकाउंट बनाया, उस अकाउंट में जो पैसा आएगा उसमें से आपको डिफरेंस क्या होगा? पे होगा। Did you get my point? तो जीएसटी कॉम्पनसेशन सेस क्या है? अब देखो, the GST compensation cess, the cess comprise the cess levied on the sin and luxury goods for 5 years. sin and luxury goods, sin and luxury goods क्या होते हैं? luxury goods जैसे कि कोई रोल्स रॉयस खरीद रहा है, भाई वो लग्जरी है, उस पे वो एक जीएसटी कॉम्पनसेशन सेस लगा देंगे। सिन गुड्स है मतलब अल्कोहल सिन गुड हो गया, सिगरेट सिन गुड हो गया, जो कि हार्मफुल है सोसाइटी के लिए, उनको सिन गुड्स कहते हैं। ठीक, वो डायमंड खरीद रहा है, लग्जरी आइटम है, उस पे आप ये लगा दोगे। तो सिन और लग्जरी गुड्स पे एक अलग थोड़ा सा सेस लगा के आप क्या करोगे? एक नया अकाउंट बना दिया, उसमें जो भी पैसा आएगा वो स्टेट्स को कॉम्पनसेशन की फॉर्म में जाएगा। गेट माय पॉइंट? और ये 5 इयर्स के लिए था। नाउ एक्सटेंडेड बियॉन्ड 5 ईयर ड्यू टू कोविड-19 पेंडेमिक। ठीक है, 5 साल के लिए था, 22 तक लगना था, बट उसको एक्सटेंड कर दिया है अभी। ठीक है, पेंडेमिक के कारण, बिकॉज पेंडेमिक से सब डिस्ट्रक्ट हो गया था बीच में। The entire cess collected during the year is required to be credited to a non-lapsable fund, GST compensation cess fund. Non-lapsable का क्या मतलब है? Non-lapsable का मतलब है कि वो लैप्स नहीं होता। मतलब लैप्स मतलब कई फंड्स ऐसे होते हैं जो एक फाइनेंशियल ईयर के लिए क्रिएट किए जाते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक अच्छी बात बताता हूँ आपको, डिमांड फॉर ग्रांट्स याद है? डिमांड फॉर ग्रांट्स में क्या हो रहा था? हर स्टेट मनी क्या कर रहा था? मांग रहा था। किससे मांग रहा था? फाइनेंस मिनिस्ट्री से। फाइनेंस मिनिस्ट्री उस डिमांड 1000 करोड़ मान लो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट ने मांगी कि हमें अगले साल 1000 करोड़ रुपए चाहिए, तो बजट में फाइनेंस मिनिस्ट्री ने 1000 करोड़ रुपए अलॉट कर दिए उनको। अलॉट कर दिए का मतलब ये नहीं है कि 1000 करोड़ रुपए ट्रक में भर के मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को पहुंचा रहे, नहीं भाई साहब, वो रखा हुआ है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, और आपको जब जब चाहिए होगा वो प्रॉपर एक मैकेनिज्म के थ्रू पैसा उससे क्या हो जाएगा, निकाल सकते हो। 1000 करोड़ रुपए की एक्सेस दे दी उन्होंने आपको कि 1000 करोड़ रुपए आप सीएफआई से क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। अब ये एक फाइनेंशियल ईयर के था, अगर उस एक फाइनेंशियल ईयर में आप उस पैसे को खर्च नहीं करते, ठीक है, अगर उस एक फाइनेंशियल ईयर में आपने मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट ने प्रोजेक्ट चलाए, वो चलाए, स्कीम चला दी सारा, और 900 करोड़ रुपए ही एंड तक खर्च कर पाए, तो वो 100 करोड़ रुपए जो कि सीएफआई में रखा हुआ था, ठीक है, वो आपका जो जैसे ही 31 मार्च आया और आपने जितना खर्च कर लिया 1000 तक की एक्सेस थी, 1000 करोड़ तक की, 1000 करोड़ तक से आगे तो खर्च कर नहीं पाओगे क्योंकि एक्सेस ही 1000 करोड़ तक की है। 1000 करोड़ से कम आप खर्च कर सकते हो, और कम में अगर आपने मान लो 900 करोड़ तक ही खर्च किया, तो 100 करोड़ जो अंदर बच गया ना, वो लैप्स हो गया। लैप्स हो गया मतलब अब आपका टाइम खत्म हो गया, आप अब खर्च नहीं कर सकते उसमें से। ऐसा नहीं होता है कि वो 100 करोड़ रुपए कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा कि अगले वाले फाइनेंशियल ईयर जुड़ेगा, नहीं, समझ रहे हो, वो नहीं जुड़ता, वापस आपको डिमांड फॉर ग्रांट्स अगला चला जाएगा। डिड यू गेट माय पॉइंट? मतलब वो लैप्सेबल फंड है, जो फंड मिनिस्ट्री आपको दे रही है, जो ग्रांट दे रही है डिमांड की, वो लैप्सेबल है। अगर आप एक्सेस कर लेते हो तो खर्च हो जाता है, नहीं एक्सेस करोगे तो ऑटोमेटिकली वो जैसे टाइम पीरियड खत्म होगा वो लैप्स हो जाएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? दिस इज द लैप्सेबल फंड। नाउ हियर द वर्ड्स कम द नॉन लैप्सेबल। नॉन लैप्सेबल का मतलब है कि जितने टाइम पीरियड के लिए बनाए या एक फाइनेंशियल ईयर के लिए बनाए तो लैप्स नहीं होगा, वो कैरी फॉरवर्ड होता जाएगा, उसके अंदर रखा रहेगा पैसा वो, ठीक है, दैट इज अ लैप्सेबल, नॉन लैप्सेबल। सो नॉन लैप्सेबल है मतलब ऐसा नहीं कि वो एक टाइम पीरियड के बाद खत्म हो जाएगा, नहीं, वो लैप्सेबल नहीं है, नॉन लैप्सेबल है, उसमें रहेगा ऐसा बाद में। द कलेक्टेड कॉम्पोजिशन सेस फ्लोज इनटू सीएफआई। सेस सारा सीएफआई में जाता है, आपको पता है, ठीक है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जाता है सेस, पहले बताया था। द कलेक्टेड कॉम्पोजिशन सेस फ्लोज इनटू सीएफआई एंड इज देन ट्रांसफर्ड टू द पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया वेयर द जीएसटी कॉम्पोजिशन फंड हैज बीन क्रिएटेड। तो ये जीएसटी कॉम्पोजिशन फंड जो है ना, ये कहाँ क्रिएट किया गया है? पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया में क्रिएट किया गया, ध्यान रखना इस चीज को, ये क्रिएट किया गया पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया में। सेस जाता है सीएफआई में, तो सीएफआई से ये ट्रांसफर होता है किसमें? पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया में। और पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया एग्जीक्यूटिव के पास रहता है, तो उसमें से वो कभी भी जिस भी मतलब स्टेट्स को जितना बन रहा होगा उतना वो पे कर देंगे, समझ गए? सो दिस इज योर जीएसटी कॉम्पनसेशन टू स्टेट्स एक्ट। तो 14% की जो एनुअल ग्रोथ है वो उसको चेक करते हैं, अगर एनुअल ग्रोथ 14% तक रहती है तो वेल एंड गुड है। 16-18 जा रहे हैं तो कोई कॉम्पनसेशन नहीं है, 14 से कम रहेगा, जितना कम डिफरेंस बन रहा होगा उतना आपको क्या मिल जाएगा? इस कॉम्पनसेशन सेस से पैसा मिल जाएगा। अगर इस कॉम्पनसेशन सेस में पैसा कम पड़ जाता है तो गवर्नमेंट उसको किसी और मीन से क्या करती है? अरेंज करती है, ठीक है, दैट वुड बी डन बाय द गवर्नमेंट, उसमें अपने को नहीं जाना है। बट हाँ, गवर्नमेंट मतलब करेगी क्योंकि एक्ट बना हुआ है,
इसमें होगा भी कहीं से कि वापस अगर इनके शॉर्टफॉल हो रहा है जीएसटी कॉम्पनसेशन सेस में तो कहाँ से लाना है, ठीक है, दैट्स नॉट आवर डोमेन। ओके, ये समझ में आया? सर 4th पॉइंट एक बार वापस रिपीट करना प्लीज। Improve environment. Okay, sorry. The generation of revenue under this act would have happened through a GST compensation सर cess. 4th पॉइंट उसके बाद I'm में। sorry. The entire cess collected during the year is required to be credited to a non-lapsable fund, GST compensation cess fund. देखो सेस जो होता है ना, वो सारा सेस जो होता है वो कहाँ जाता है? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जाता है। ये हमको पता है, हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा है कि सारे सेस और सरचार्ज कहाँ जाते हैं? सीएफआई में जाते हैं। बट सीएफआई में के अंदर भी आप क्या करते हो? एक अलग डिफरेंट कैटेगरी रख सकते हो ना, इस सेस की कैटेगरी है। तो जीएसटी कॉम्पनसेशन सेस जो है ना, वो सारा पैसा उसके अंदर जा रहा है। किसमें जा रहा है? जीएसटी कॉम्पनसेशन सेस फंड में जा रहा है। बट वो फंड जो है ना, अल्टीमेटली सीएफआई से आ कहाँ रहा है? ट्रांसफर टू द पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया, ठीक है सीएफआई के अंडर है, जाएगा सीएफआई में, बट वो फिर वहां से ट्रांसफर किसमें कर देंगे? पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया में। तो जीएसटी कॉम्पनसेशन सेस में जितना पैसा आएगा, वो पैसा आएगा कहां से? सिन गुड्स और लग्जरी गुड्स पे। फॉर एग्जांपल शराब पे उन्होंने लगा दिया, एल्कोहल कंजम्पशन पे आपने लगा दिया 10% क्या लगा दिया? जीएसटी कॉम्पनसेशन सेस लगा दिया। अब जब भी शराब खरीदने जाओगे उसके ऊपर एक उतना परसेंट क्या लग जाएगा? सेस लग जाएगा। पूरे इंडिया में जितनी शराब बिक रही है, सब शराब पे क्या लग रहा है? सेस लग रहा है, ठीक है। 1000 करोड़ की शराब एक दिन में बिकी, उस 1000 करोड़ की शराब पे मान लो 1 करोड़ रुपए सेस कलेक्ट हुआ। 1000 करोड़ से तो बहुत ज्यादा बिक जाती है एक दिन में, ठीक है। तो वो जो पैसा कलेक्ट हो रहा है, वैसे मर्सिडीज बिक रही है या बीएमडब्ल्यू बिक रही है या कुछ और जो लग्जरियस आइटम है, डायमंड्स बिक रहे हैं, उनपे एक जीएसटी सेस लग रहा है। पूरे इंडिया में जितना लग रहा है वो सारा कलेक्ट होकर कहाँ जा रहा है? सीएफआई में जा रहा है। सीएफआई में एक अलग ब्रैकेट बना हुआ है, उसमें सेस का है, जीएसटी कॉम्पनसेशन सेस में इतना आया, बिकॉज उन कॉमोडिटीज से अट्रैक्ट हुआ ना, अट्रैक्ट होकर इतना पैसा आया उसमें। वो जो पैसा आएगा वो सारा पैसा है कौन सा? जीएसटी कॉम्पनसेशन सेस है, बट है किसके अंडर? सीएफआई के अंडर है। अब सीएफआई के अंडर से निकालने के लिए वापस पार्लियामेंट की परमिशन लेनी पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि सीएफआई के अंडर आ रहा है। सीएफआई के अंडर लेने की परमिशन आपके पास ऑलरेडी है, बिकॉज आपने बजट पास करवा दिया ना, बजट ने बोल दिया सीएफआई से पैसा निकाल सकते हो। इस पैसे को इधर से आप ट्रांसफर कर देते हो पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया में। तो एग्जीक्यूटिव उसमें से क्या करता रहता है? स्टेट्स को देता रहता है, जिससे स्टेट का क्या हो रहा है? 14% से नीचे रेवेन्यू ग्रोथ हो रहा है। 14 से 12 जाएगा, 2% का डिफरेंस बना, वो 2% का डिफरेंस क्या कर लेगा? पे कर देगा। गॉट इट? यस सर। तो ये एंटायर सेस, जो 4th पॉइंट जो आप कह रहे हो, एंटायर सेस कलेक्टेड ड्यूरिंग द ईयर इज रिक्वायर्ड टू बी क्रेडिटेड टू एन नॉन लैप्सेबल फंड। तो वो नॉन लैप्सेबल है, मतलब वो फंड ऐसा नहीं कि 1 साल के बाद क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा, नहीं, वो रहेगा, वो हमेशा नॉन लैप्सेबल है, उसके अंदर पैसा इकट्ठा होता रहेगा, ठीक है। ओके सर। सर डिमांड फॉर ग्रांट्स को पता था क्या लैप्सेबल? हाँ, डिमांड फॉर ग्रांट लैप्सेबल होती है, मतलब वही है। मिनिस्ट्री को 1 साल के लिए जो पैसा मिल रहा है ना, मिनिस्ट्री ने 1000 रुपए मांगे बजट में, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने बजट में 1000 करोड़ रुपए दे दिए, 1000 करोड़ रुपए दे दो, मतलब वो वही मैंने बताया ना, 1000 करोड़ रुपए ट्रक में भर के मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट को पहुंचाया नहीं जाता कि आप इसको खर्च करो, नहीं, उनको कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से 1000 करोड़ रुपए का एक्सेस मिल जाता है कि आप पूरे साल में 1000 करोड़ रुपए तक आप एक्सेस कर सकते हो सीएफआई से, ठीक है। अब वो एक्सेस अगर 1000 करोड़ रुपए तक कर लेते हो तो आपकी लिमिट खत्म, उसके आगे पैसा आप उससे ले नहीं सकते क्योंकि उतना ही आपको मिलना था। उससे कम करते हो अगर, और आपका टाइम खत्म हो जाता है, पूरा फाइनेंशियल ईयर खत्म हो गया, तो फिर वो बचा हुआ जो है ना, वो आप एक्सेस नहीं कर पाओगे, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं है कि वो मान लो इस फाइनेंशियल ईयर में 1000 करोड़ मिला था, उसमें से मैंने 500 ही खर्च किया, 500 करोड़ मैंने बचा दिया, तो मेरे नेक्स्ट जो डिमांड फॉर ग्रांट्स आएगी उसमें 500 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा ऐड कर लेना, नहीं, ऐसा नहीं होता है। वो लैप्सेबल है, 1 साल के अंदर यूज करना है, नहीं करोगे तो वो वापस, रखा तो सीएफआई में है ना, ठीक है, सीएफआई में रखा हुआ है, तो आप नहीं ले सकते उसको, आगे नहीं कैरी फॉरवर्ड होता। गॉट इट? तो डिमांड फॉर ग्रांट्स फ्लेक्सिबल होती है, खत्म हो जाती है। यस, और बताइए, चले आगे। Yes, sir. यस सर। Yes, sir. बोर तो नहीं हो रहे हो? No, sir. No, sir. वेरी गुड, बोर नहीं होना है। और रट्टा नहीं मारना है ना चीजों का, ठीक है, समझना है सारी चीजों को। रट्टा मारोगे तो दिक्कत हो जाएगी। नेपोलियन की स्टोरी सुनी है ना एक? किस किसने नेपोलियन की स्टोरी सुनी है? एक
किसी ने नहीं सुनी? कोई यस नहीं कर रहा? सर वो क्या कहते हैं, हाथ काट के उसने रेखा बनाया वो? नहीं 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 नहीं, नेपोलियन एक बार क्या हुआ था कि नेपोलियन अपनी जो आर्मी थी ना उसमें रिक्रूटमेंट्स कर रहा था। तो नेपोलियन ने रिक्रूटमेंट के लिए बोला, तो एक मतलब एक पर्सन था, ठीक है, तो वो क्या वहां का नहीं था, इंडिजिनस पीपल नहीं था, वो बाहर का था। तो उसकी कंट्री में उसको जॉब नहीं मिल रही थी, और उसको फ्रेंच वगैरह आती नहीं थी, वहां की इंडिजिनस लैंग्वेज आती नहीं थी उस नेपोलियन की कंट्री की। तो उसने, उसका एक फ्रेंड था जो वहीं का था, नेपोलियन की आर्मी में था वो। तो उसने बोला कि तू एक काम कर, तू यहाँ आ जा, नेपोलियन आर्मी अपनी एक्सटेंड कर रहा है, तो मैं तुमको यहाँ रिक्रूटमेंट दिलवा दूंगा। तो वो बोलता है कि बट मुझे लैंग्वेज तो आती नहीं। तो बोलता है नहीं, हो जाएगा ना जुगाड़, तू आ तो सही। तो वो वहां आ जाता है। अब उसको लैंग्वेज तो आती नहीं, ठीक है, बट एक ट्रेंड होता है कि नेपोलियन जब भी अपनी आर्मी को इंस्पेक्ट करने के लिए आता है तो वो 3 क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। पहला क्वेश्चन वो पूछता है कि अ, तुम्हारी एज क्या है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन पूछता है तुम्हारी एज क्या है। सेकंड क्वेश्चन वो पूछता है कि कितने सालों से तुम मेरी आर्मी में हो, ठीक है, फॉर हाउ मेनी इयर्स यू आर सर्विंग इन माई आर्मी। और थर्ड क्वेश्चन वो पूछता है कि जो लास्ट दोनों वॉर हमने लड़े हैं, ठीक है, द प्रीवियस 2 battles which we fought, were you the part of those battles? ओके, क्या तुम उन दोनों बैटल का पार्ट थे? तो 3 क्वेश्चन वो पूछता है। तो वो उसके फ्रेंड को बुला लेता है, उसको बोलता है कि तू काम करना, अगर वैसे तो इंस्पेक्शन में सब लोगों का इंस्पेक्शन नहीं होता, बट इन केस अगर तेरे पास आके नेपोलियन रुक जाए और पूछ ले, तो तू फर्स्ट टाइम जब वो बोल के रुके, ठीक है, तो तू बोल देना 42 ईयर्स। व्हाट इज योर एज? बोल देना 42 ईयर्स। सेकंड बोलता है कि जब वो सेकंड टाइम रुके तो बोल देना कि 12 ईयर्स, मतलब मैं 12 ईयर्स से आपकी आर्मी में हूँ, ठीक है। और थर्ड वो जब पूछे तो बोल देना बोथ सर, ठीक है, मैं दोनों वॉर में था। तो ये तीनों उसको आंसर रटा देते हैं, रटा के उसको खड़ा कर देते हैं। और अनफॉर्चुनेटली नेपोलियन उसी के पास आके रुक जाता है सामने, ठीक है। अब नेपोलियन उसको पूछता है फर्स्ट, व्हाट इज योर एज सर? नहीं, नेपोलियन उसको पूछता है व्हाट इज योर एज सर, ठीक है। नहीं नहीं सर सर, वो एक्चुअली क्वेश्चंस का सीक्वेंस चेंज कर देता है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो नेपोलियन पूछता है, सेकंड क्वेश्चन क्या था अपना? व्हाट वाज द सेकंड क्वेश्चन? हाँ, फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन वो पहले पूछता है, वो कहता है कि कितने साल से आप मेरी आर्मी में हो? तो वो कहता है सर 42 ईयर्स, ठीक है। तो नेपोलियन एकदम शॉक हो जाता है, 42 ईयर्स मेरी आर्मी में? भाई 42 ईयर्स तो मैंने आर्मी बनाए हुए नहीं हुए। फिर वो पूछता है कि ओके सर व्हाट इज योर एज? तो वो कहता है सर 12 ईयर्स, ठीक है। वो उसी वजह इंडिजिनस लैंग्वेज में आंसर दे देता है 12 ईयर्स। तो नेपोलियन फिर शॉक हो जाता है। फिर नेपोलियन एकदम सस्पिशियस वे में देखता है और बोलता है कि जो लास्ट दोनों वॉर हुए उसमें आप नहीं, बोलता है कि नहीं, वो पूछता है कि तुम में और मुझ में पागल कौन है? तो बोलता है बोथ सर। वो कहते हैं बोथ आर बैड, ठीक है। तो इस तरीके से प्रॉब्लम हो जाती है जब आप रट्टा मारते हो, ठीक है। तो चीजें रट्टा नहीं मारनी है। अब मुझे तो पता भी नहीं चल रहा है कि आप लोगों को जोक समझ में आया नहीं आया, क्योंकि कोई रेस्पॉन्स ही नहीं आ रहा। Yes, sir. ओके ओके, तो इसीलिए रट्टा नहीं मारना है, ठीक है। इकोनॉमिक्स में तो क्या रट्टा मारने जैसा कुछ है भी नहीं। चले आगे। Yes, sir. ओके, Yes, sir. अब एक अपन ने एक चीज बीच में रही थी, जीएसटीएन। हमने सुना था ना, जीएसटी नेटवर्क होता है एक, जिसपे आप जाके कंप्लाइंस करते हो। बहुत सिंपल है, जीएसटी नेटवर्क एक क्या है? प्लेटफॉर्म है। तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क और जीएसटीएन इज ए नॉन प्रॉफिट नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। कीप इन माइंड, ये नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। नॉन गवर्नमेंट इसका मतलब ये नहीं है कि इस पे आप कंप्लाइंस वगैरह में कोई गफला हो जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है। इसमें बहुत रेस्पॉन्सिबल बॉडीज इन्वॉल्व। It will manage the entire IT system of GST portal, which is mother database for everything GST, ठीक है। GST ये देखो, रजिस्ट्रेशन, चालान, ठीक है, रिफंड्स, रिटर्न्स, ऑडिट्स, अपील्स, ये सारा काम जो है जीएसटी नेटवर्क के थ्रू होता है। द गवर्नमेंट विल यूज दिस पोर्टल टू ट्रैक एवरी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन एंड प्रोवाइड टैक्स पेयर विद ऑल सर्विसेज फ्रॉम रजिस्ट्रेशन टू फाइलिंग टैक्सेस एंड मेंटेनिंग ऑल टैक्स डिटेल्स। ये सारा काम इसी पे होता है, नेटवर्क पे। प्राइवेट प्लेयर्स ओन 51% शेयर इन द जीएसटीएन एंड द गवर्नमेंट ओन द रेस्ट, ठीक है। रिमेनिंग गवर्नमेंट का है। गवर्नमेंट ने एक रेजोल्यूशन लाया है जिससे कि वो पूरा ओन करे इसको, मेजोरिटी शेयर होल्डिंग गवर्नमेंट की हो, बट अभी ये कोविड के बाद से वो रेजोल्यूशन गया नहीं है पूरा, ठीक है। तो दैट इज योर जीएसटी नेटवर्क, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, डू दिस।
You have 2 minutes. यूपीएससी प्री क्वेश्चन है 2017 का. yes sir. यस, आंसर आ रहे हैं क्या? टेक योर टाइम, अभी 2 मिनट हुए नहीं. लेट्स चेक. हटा दें? यस सर. ओके. A. Let me enunciate it correctly. Joy said A. Okay. ये ठीक था? यस सर. ओके. सब लोगों ने एक ही आंसर दिया है. वो बोलूं कि ये गलत है तो यूपीएससी प्री 2017 का क्वेश्चन है. जीएसटी बिल पास हुआ था रिसेंटली, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था ये. It will replace, first is the what are the most likely advantages of implementing GST? Simple question है. Most likely advantages. First, it will replace multiple taxes collected by multiple authorities and will thus create a single market in India. Definitely, it is true. It is true. The first is true. Second, it will drastically reduce the current account deficit. What is current account deficit? We'll discuss. आने वाले deficits अगला slide scene में. Drastically reduce the current account deficit of India and will enable it to increase its foreign exchange reserve. यहाँ पे 2 चीजें हैं. पहला तो क्या है कि इन्होंने बहुत ड्रास्टिक बोल दिया है. ड्रास्टिक मतलब एक्सट्रीम हो गया है. एक्सट्रीम है इसका मतलब पॉसिबिलिटी कि ये गलत हो. बट सिर्फ एक्सट्रीम वर्ड देख के हमको गलत नहीं करना है, एक सिर्फ परसेप्शन बनाना है कि गलत हो सकता है. तो ड्रास्टिकली रिड्यूस मतलब गलत होने की पॉसिबिलिटी. करंट अकाउंट डेफिसिट क्या होता है अभी अपने को पता नहीं है, ठीक है, तो कोई बात नहीं, इसको थोड़ा सा छोड़ देते हैं. वो ड्रास्टिकली से गलत हो गया. विल इनेबल इट टू इंक्रीज इट्स फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व. भाई साहब, जीएसटी बढ़ने से एकदम से फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बढ़ जाएगा क्या? बहुत ज्यादा, कोई बहुत ज्यादा रिलेशन बन नहीं रहा है, ठीक है. फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा सडनली, ऐसा नहीं है, ठीक है. तो ड्रास्टिकली रिड्यूस एंड विल इनेबल इट टू इंक्रीज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बढ़ सकता है. फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बढ़ने की क्या पॉसिबिलिटी है? बिकॉज ईज ऑफ डूइंग बिजनेस होगा तो कहीं ना कहीं एक फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इंडिया में आने का पॉसिबिलिटी रहेगा. पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में इंडिया में आने का पॉसिबिलिटी रहेगा. तो कहीं ना कहीं फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बढ़ने का पॉसिबिलिटी है. बट स्टिल एकदम से इतना नहीं बढ़ेगा, पहली बात, ठीक है. सेकंड चीज है कि करंट अकाउंट डेफिसिट को बहुत ड्रास्टिकली रिड्यूस कर दिया, ये भी गलत है, ठीक है. करंट अकाउंट डेफिसिट नहीं पता अपने को, बट ये है कि जो करंट अकाउंट होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, बैलेंस ऑफ पेमेंट पढ़ेंगे, उसका डेफिसिट जो होता है वो बिल्कुल रिड्यूस हो जाता है, वो नहीं होगा, ये गलत है. सेकंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग. थर्ड, इट विल इनॉर्मसली इंक्रीज द ग्रोथ एंड साइज ऑफ इकोनॉमी. अब ये इनॉर्मसली, भाई साहब, अगेन इट इज एक्सट्रीम स्टेटमेंट. इनॉर्मसली इंक्रीज द ग्रोथ एंड साइज ऑफ इकोनॉमी ऑफ इंडिया. तो यहाँ पे इनॉर्मस आ गया, एकदम एक्सट्रीम. इतना भी कोई जीएसटी चेंज नहीं ला देगा कि एकदम आप रॉकेट की स्पीड से चल लोगे, नहीं. तो ये गलत होने की संभावना है. Will enable it to overtake China in the near future. It is the, after reading this statement in examination, I was flabbergasted. What is this? Overtake China in the near future. ठीक है, चाइना से तो बहुत दूर है अभी इंडिया. इंडिया तो अभी 3 ट्रिलियन के पास इंडिया का जो ग्रोथ जीडीपी जा रहा है. चाइना कहाँ है? करीब 12 के आसपास है. यूएसए 17 के आसपास है.
3 से कहाँ 13 को कंपेयर कर पाओगे? डेफिनेटली बहुत दूर है, चाइना बहुत आगे इंडिया से। तो आप साइज ऑफ इकोनॉमी इंडिया का इतना बड़ा हो नहीं पाएगा, चाइना बहुत बड़ा है, ठीक है। तो ये एग्जेगरेटेड स्टेटमेंट है, ये गलत हो गया। तो 2 और 3 गलत ही हो गए, तो ओनली 1 ए इज द करेक्ट आंसर। आंसर सभी ने सही दिया है, ठीक है। सो सिंपल क्वेश्चन देखो। अब मुझे बताओ, ये क्वेश्चंस हमने अभी तक जितने भी क्वेश्चन किए यूपीएससी प्रीलिम्स के, आपको एक भी क्वेश्चन ऐसा लगा कि बहुत मुश्किल था? नो सर। क्योंकि मुश्किल नहीं होता No, क्वेश्चन, sir. ठीक है, नहीं होते ही नहीं मुश्किल क्वेश्चन है। बस ये है कि आपकी अगर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी अच्छी है ना, तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। और इससे भी इंपॉर्टेंट है आपकी प्रैक्टिस, ठीक है। कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, पोस्ट दैट यू नीड टू डू लॉट ऑफ रिविजन, आफ्टर दैट लॉट ऑफ न्यूज़पेपर रीडिंग। एक ही कॉन्सेप्ट को 4 बार पढ़ोगे ना, 4 अलग अलग तरीके से सोच पाओगे। न्यूज़पेपर रीडिंग में आर्टिकल पढ़ोगे, दैट विल प्रोलिफरेट योर लेवल ऑफ नॉलेज एंड आपकी एनालिटिकल कैपेसिटी बढ़ाएगा। और आफ्टर दैट यू नीड टू डू लॉट्स ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस, ठीक है। प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी है। जितना ज्यादा क्वेश्चन करोगे, गलत करोगे फिर सही करोगे, गलत करोगे फिर सही करोगे, अल्टीमेटली सही करोगे, ठीक है। तो प्रैक्टिस। सो टेस्ट सीरीज इज वेरी इंपॉर्टेंट। This is the thing. Self-reading, GST composition scheme, e-way bill system, NAPA that is National Anti-Profiteering Authority, AR that is AR क्या होता है? AR एंटी अवॉइडेंस कुछ है, ठीक है। GST बेनिफिट्स एंड चैलेंजेस, ये सब आपको पढ़ना है, ठीक है। ये जो सारी चीजें लिखी हुई है, ये सब आप लोगों को पढ़ना है। सेल्फ रीडिंग है, बहुत सिंपल चीज है, हम क्लास में भी कवर कर सकते हैं, बट बहुत लेंथी हो जाएगा, डजंट मेक सेंस, ठीक है। इनको आप सेल्फ रीडिंग करेंगे। चलो आगे बढ़े। Yes, sir. यस सर। मेंस के कुछ प्रीवियस क्वेश्चन है यूपीएससी में आए हुए, इनको देख लेते हैं थोड़ा सा। पहला क्वेश्चन देखो, सर नीचे से देखो, नीचे से पहले 2013 का क्वेश्चन देखते हैं। 13 में, क्योंकि 11 में पहले ही विजय केलकर कमेटी ने तो उसके पहले बोल दिया था, 2004 में ही बोल दिया था कि जीएसटी का बात करना है, ठीक है। 6 में बोला था, 4 में बोला था, और 11 में बिल इंट्रोड्यूस कर दिया था यूपीए ने। तो डिस्कस द रैशनल फॉर इंट्रोड्यूसिंग द जीएसटी इन इंडिया, bring out critically the reason for the delay in rollout of its regime. It's a very simple and very generic question, ठीक है। One who did a single reading of GST na, and who have a basic understanding of the taxation regime in India na, will able to write the answer, and a very good answer, okay. What read the question? I think ये 12 नंबर का क्वेश्चन था। Discuss the rationale for introducing GST in India. हमने सारा rationale डिस्कस किया है कि क्या क्या दिक्कत आ रही थी, जो प्रॉब्लम्स थी ना, वो सारी प्रॉब्लम्स को इसमें एलोबरेट करना है। भाई कैस्केडिंग हो रही थी, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन नहीं था, मल्टीप्लिसिटी ऑफ टैक्सेस था, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं था, ठीक है, जो हार्मोनाइजेशन है लॉ वो नहीं थे, ठीक है। उन सब की वजह से यही तो रैशनल है, इसी वजह से तो जीएसटी आना चाहिए, ठीक है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस होगा तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं इंडिया की तरफ अट्रैक्ट हो रहा था, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, मेक इन इंडिया को बूस्ट नहीं मिल रहा है, ये सारी चीजें। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को बूस्ट नहीं मिल रहा था तो लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री को बूस्ट नहीं मिल रहा है, लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री को बूस्ट नहीं मिलेगा तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं होगी, तो एडवर्स इंपैक्ट पड़ेगा, ठीक है। ये सारी चीजें लिखनी थी। तो रैशनल तो बहुत सारे हैं, आप इस पे ऐसे लिख सकते हो पूरा। तो डिस्कस द रैशनल फॉर इंट्रोड्यूसिंग जीएसटी इन इंडिया, ब्रिंग आउट क्रिटिकली द रीजन फॉर द डिले इन रोल आउट ऑफ इट्स रिजीम। अब डिले क्यों हो रहा था, जब इतना पहले विजय केलकर कमेटी ने बोल दिया था, उसके बाद गवर्नमेंट लेकर आ गई थी 11 में, फिर भी 2 साल तक ये बिल पास नहीं हुआ। 2013 का मेन से, इसका मतलब ये दिसंबर में हुआ होगा, ठीक है। 2013 का मेन से करीब करीब दिसंबर में हुआ होगा, तो 2013 भी पूरा निकल गया। 11 में उन्होंने बिल ले आया था, 2-2.5 साल तक बिल ही डिले चल रहा था। 14 में तो डिसॉल्व ही हो गया वो असेंबली, लोकसभा। तो इतना डिले क्यों हो रहा था, और डिले क्यों हो रहा था आपको पता है। सबसे पहला तो उसको लेजिस्लेटिव जो उसका प्रोसीजरल एस्पेक्ट थे वो क्या थे, बहुत स्ट्रिक्ट थे, बिकॉज आपको फेडरल स्ट्रक्चर, फेडरल सेंट्रल और स्टेट के रिलेशन को क्या कर रहा था, इम्पैक्ट कर रहा था। दैट्स व्हाई यू नीड टू टेक द अप्रूवल फ्रॉम द 50% ऑफ स्टेट असेंबलीज ऑल्सो, ओके। तो स्टेट असेंबलीज का अप्रूवल लेना एक डिफिकल्ट टास्क होता है, ठीक है। कंसेंसस नहीं बना पाते आप, स्टेट के साथ बैठ के आपको एक म्यूचुअल सिनर्जी बनानी पड़ती है, वो एक दिक्कत थी। सबसे बड़ा दिक्कत एक्चुअली वही था। और सेकंड क्या था कि एक जो आप इतने सारे मल्टीपल टैक्सेस को आप एक सिंगल टैक्स रिजिम में बनाओगे, तो कहीं ना कहीं इतने सारे जो स्टेक होल्डर्स इसमें इन्वॉल्व है, हर स्टेट का अपना अपना क्या था, इंटरेस्ट था, हर स्टेट के अपने अपने टैक्सेस थे। तो ये जो डाइवर्सिटी था, इस डाइवर्सिटी वाली चीज को एक सिंगल प्लेटफॉर्म पे लाके एक सिनर्जी बना के एक पॉजिटिव आउटकम निकालना इज ऑलवेज अ बिग टास्क इन इंडिया। तो एक जो डाइवर्स पर्सपेक्टिव जो थे टैक्स को लेके, वो भी क्या थे, कहीं ना कहीं एक हर्डल थे। तो एक तो लेजिस्लेटिव हर्डल हो गया, सेकंड ये टेक्निकल हर्डल भी आ गया,
ये सारी चीजें मिलके क्या बनती, हर्डल बनती। तो यही है, और इतना बड़ा तो आंसर भी नहीं होता, क्योंकि 12 नंबर का क्वेश्चन है तो कितना 300 वर्ड्स लिखो, वो 300 वर्ड्स में इतना बहुत हो गया है। तो ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट में ये लिखोगे कि रैशनल क्या है जीएसटी इंट्रोडक्शन के, सेकंड में क्या लिखना है, इसके रोल आउट में डिले क्यों हो रहा है। समझ आया? यस सर। वेरी गुड। Explain the salient features of Constitution 101st Amendment Act. ठीक है, 2016, ओके, ये इसी का ईयर लिखा हुआ है, 101st Amendment Act 2016. Explain the salient features of 101st Amendment Act. मतलब ये जीएसटी एक्ट के ही salient features के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, ये भी 12 नंबर का क्वेश्चन था। तो आपको सिंपली जीएसटी एक्ट के अंदर क्या क्या एक्ट पास हुए उनके बारे में बेसिक डिटेल लिखनी। ये फैक्चुअल है, मोर और लेस फैक्चुअल क्वेश्चन, उसमें कुछ एनालिटिकल नहीं पूछा उसने। तो सेलिएंट फीचर से पूछा, सीधा सीधा क्वेश्चन, एक्सप्लेन द सेलिएंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 101st अमेंडमेंट एक्ट। इसमें इसने जीएसटी नहीं लिखा है, ये लिखा है 101st अमेंडमेंट एक्ट। डू यू थिंक इट इज efficacious enough to remove the cascading effect of taxes and provide for common national market for goods and services? This is also very simple. जिसको बेसिक अंडरस्टैंडिंग वो लिख देगा, भाई कैस्केडिंग इफेक्ट को तो कम कर ही रहा है ना। ठीक है, और बिल्कुल है, इफिकेशियस तो है ही है। इफिकेशियस कैसे है? क्योंकि कैस्केडिंग इफेक्ट को कम करने के लिए उसने क्या करना है, जीएसटी में भी वैल्यू एडिशन वाला टैक्स ही होता है और उसके बाद इनपुट टैक्स क्रेडिट भी है। इन दोनों को मिला लोगे तो आपको कैस्केडिंग इफेक्ट तो आपको ऑलमोस्ट क्या हो जाएगा, खत्म ही हो जाएगा, इन्फ्लेशनरी इफेक्ट आएगा ही नहीं। इसको ही एक्सप्लेन करना था। ठीक है, और वो डू यू थिंक बोल रहा है, इसका मतलब आपको एक पॉजिटिव रेस्पॉन्स देना है कि यस डेफिनेटली, बिकॉज इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल है। ठीक है, और ये देखो कब आया है, 2017 में ये क्वेश्चन आया है। इसका मतलब अभी तक वो सिर्फ इंट्रोडक्शन में आया है और शुरू में ही ये क्वेश्चन आ गया कि आपको लग रहा है कि ये कर पाएगा। तो आपको एक प्रोस्पेक्टिव पॉजिटिव अप्रोच वाला आंसर देना। देखो, ऑलवेज कीप इन माइंड इफ गवर्नमेंट इज कमिंग अप विद समथिंग, ठीक है, you can be critical of the government, okay, but while writing your answer you should not be blatantly critical of the government, let me tell you, okay, blatantly critical नहीं होना है गवर्नमेंट का। ठीक है, हो सकता है गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी है जिसमें आपको लूप होल दिख रहा है। एक चीज आप दिमाग में गांठ बांध लो, यूपीएससी को आपका ओपिनियन नहीं जानना है। यूपीएससी डोंट वांट टू नो योर ओपिनियन, यूपीएससी इज इंटरेस्टेड इन द एक्सपर्ट्स ओपिनियन, ओके, मीन्स if UPSC is asking a question on GST, they don't need your opinion. They are just expecting you to read the expert's opinion and write that in examination whenever it will be asked. Did you get my point? ये बात समझ में आ रही है आपको? Yes sir. GST को इस तरीके से पढ़ना है कि एक्सपर्ट्स ने ओपिनियन दी है, उस एक्सपर्ट की ओपिनियन को आप कहीं ना कहीं क्या करो, इसके अंदर डालो। तो वो आपकी ओपिनियन नहीं जानना चाहते, एक्सपर्ट्स की ओपिनियन जानना चाह रहे हैं कि वो एक्सपर्ट की ओपिनियन आपको पता है या नहीं है। ठीक है, तो इसमें ये जब जीएसटी वाला इशू आया था, जीएसटी जब आया था उस समय आई स्टिल रिमेंबर देयर वर सो मेनी डिबेट्स all around, okay, everywhere so many people were, very much critical of the government. So many people are saying, no, it is a creative destruction, country needs it, it's a radical, changes, country needs radical changes in this condition and all those things. Wait. So, while writing your answer, there is a possibility that you might came across something which you have, everybody have political leaning, personal political leaning. But while preparing for UPSC, you should be very neutral. Okay, nobody can't be neutral. Nobody can be in a veil of ignorance. Okay, but still you should try to remain neutral while writing your answers. Okay, and I'm telling you, you can, remain neutral while writing your answer only when you will remain, remain neutral in your thinking. It's a difficult thing to think in certain manner and writing in certain manner. Difficult हो जाता है, cognitive dissonance हो जाएगा। cognitive dissonance, किसी को पता है cognitive dissonance क्या होता है? साइकोलॉजी वाले हैं क्या कोई? हाँ सर, हम हैं पर पता नहीं, भूल गए शायद। वेरी गुड। कॉग्निटिव डिसोनेंस वही है कि आप जो कर रहे हो वो अलग है और आप जो सोच रहे हो वो अलग है। फॉर एग्जांपल, आप किसी कंपनी में जॉब कर रहे हो बट आप वो जॉब को पसंद नहीं कर रहे हो, तो आपकी एग्जैक्टली अंदर की जो फीलिंग है वो अलग है उस काम को लेके, बट आपको वो काम करना पड़ रहा है। तो आपके अंदर एक कॉग्निटिव डिसोनेंस, एक कॉन्ट्रडिक्शन चलने लगता है, विच इज रियली हार्मफुल। ठीक है, तो वो कॉग्निटिव डिसोनेंस आप जब एथिक्स में पढ़ेंगे आप, तो आपको बताया भी जाएगा। कंडीशनिंग जब बताई जाएगी, क्लासिकल कंडीशनिंग, पेवलोवियन कंडीशनिंग, जो एथिक्स में पढ़ाया जाएगा आपको,
दैट विल डिस्कस इन एथिक्स. नाउ पॉइंट इज कि आपको गवर्नमेंट का क्रिटिक नहीं होना है, और उसके लिए आपको अपने एटीट्यूड में ही ये बात लानी पड़ेगी कि यू शुड ऑलवेज हैव अ पॉजिटिव अप्रोच टुवर्ड्स वट एवर गवर्नमेंट इज डूइंग. ओके, पॉलिटिकल साइड नहीं चेक करना है, आपको देखना है पॉलिटिकल साइड भी आपको पता लगनी चाहिए, एनालिसिस के लिए जरूरी है, बट आपको किसी भी टॉपिक को इस तरीके से पढ़ना है कि उसके पॉजिटिव्स देखने, नेगेटिव भी देखने. और गवर्नमेंट अगर वो स्कीम लेकर आ रही है, इवन फार्म बिल जो रिजेक्ट हुए थे उसमें भी आप जो नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं उनको आपका प्रेजेंट करने का वे ऐसा होना चाहिए कि कहीं ना कहीं आपकी जो लीनिंग दिखे वो प्रो गवर्नमेंट दिखनी चाहिए. इट इज नॉट अबाउट पॉलिटिकल पार्टी और समथिंग लाइक दैट. नो, कांग्रेस, बीजेपी, टीएमसी, टीआरएस, इन सब की बात नहीं की जा रही है, बात की जा रही है देश की, कंट्री की. ओके, यू विल बिकम सिविल सर्वेंट तो आप कंट्री के, देश के लिए बनोगे, ठीक, किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए नहीं बनोगे. तो अगर आप फार्म लॉ की बात कर रहे हो तो इफ गवर्नमेंट, लेजिटिमेट गवर्नमेंट इज कमिंग अप विद सम लॉ ना, तो यू शुड सी पॉजिटिव ऑल्सो. और उसमें क्लियर कोई ड्रॉबैक दिख रहा है तो उस ड्रॉबैक को बताने का एक तरीका होना चाहिए, और वो तरीका आपका मेंस के आंसर राइटिंग में भी दिखना चाहिए और वो इंटरव्यू में भी दिखना चाहिए. ठीक है, इंटरव्यू में भी अगर आपकी प्रैक्टिस सही से नहीं, आपका योर बिलीव्स बिकम योर थॉट्स बिकम योर वर्ड्स. ओके, सो दैट्स व्हाई यू नीड टू बिलीव, आपके जो बिलीव्स है वो सही होने चाहिए, तभी आपका थिंकिंग प्रोसेस और थॉट प्रोसेस कुछ और रहेगा और बोलोगे कुछ और तो वो नहीं बन पाएगा. ठीक है, दैट्स व्हाई आपका थॉट प्रोसेस एक सिविल सर्वेंट वाला होना चाहिए कि मेरे को उसी तरीके से सोचना है. ठीक है, पॉजिटिव, नेगेटिव, डार्क साइड और सारी चीजें, पॉजिटिव अप्रोच. ठीक है, तो इसमें जैसे आंसर में ही लिखा है कि क्रिटिकली, जैसे नीचे वाला देखो, क्रिटिकली मतलब आपको क्रिटिसाइज करना है उसमें, बट इसका मतलब ब्लेटेंट क्रिटिसिज्म नहीं करना है गवर्नमेंट का. गवर्नमेंट डिड इज इन अ वेरी पॉपुलिस्ट मैनर, पीपल आर डेमोगॉग एंड ऑल दिस, ये सब नहीं लिखना है. ठीक है, चाहे वो कितना ही सार्थक हो. ठीक है, यूपीएससी एग्जाम में वो निरर्थक हो जाएगा, इनसिग्निफिकेंट हो जाएगा, इवन वो आपको एक एंटी स्टेट वाली फीलिंग ना ले आए आपके लिए. ठीक है, वो नहीं होना चाहिए. ठीक है, तो एक्सपर्ट्स की ओपिनियन को आपको हमेशा लेकर चलना है. ठीक, और आपके अंदर जो क्रिएटिव आइडियाज है ना, वो आप तब यूज करना वंस यू गेट इनटू सर्विसेज. ठीक है, आप जब बन जाओ, जाते ही सबसे पहले आपको एसडीएम बना देंगे. एसडीएम जब बनो तो अपने अपने जो भी क्रिएटिव आइडियाज है उन सबको वहां पे लगाना. ठीक है, मोस्ट क्रिएटिव सिविल सर्वेंट बनना आप लोग. तो क्या ये क्वेश्चन डिफिकल्ट है, ये दोनों? नो सर, बिल्कुल सिंपल है. तो अच्छा, एक्चुअली नेक्स्ट 2019 में क्वेश्चन आया है. देखो, जीएसटी से कंटिन्यू 17, 19, 20 में क्वेश्चन आया है. Enumerate the indirect taxes which have been subsumed in the goods and service tax in India. Now this is a very factual question. ठीक है, इन्होंने तो बोल दिया कि भाई साहब इन्यूमरेट करो. इन्यूमरेट मतलब लिस्ट ही बना दो कि जो जो टैक्स किसमें हो गए, इनडायरेक्ट टैक्सेस व्हिच हैव सबज्यूम्ड इन द गुड्स एंड सर्विस टैक्स. जीएसटी में जो सबज्यूम हो गए इनडायरेक्ट टैक्स, उनकी लिस्ट बनाओ. तो इनडायरेक्ट टैक्स में जो सबज्यूम हुए, उसमें जो मेजर टैक्स सबज्यूम हुए वो थे एक्साइज, सेंट्रल एक्साइज हुआ सबसे पहले. सेंट्रल एक्साइज के बाद सेल्स टैक्स हुआ और सर्विस टैक्स हुआ. ये तीन बड़े टैक्सेस है जो सबज्यूम हुए. उसके अलावा और भी छोटे मोटे टैक्सेस सबज्यूम हुए. तो पूरी एक 50-60 की लिस्ट बनाने को नहीं कह रहा है, बट एटलीस्ट आप 4 से 5 अगर लिख लेते तो एन्यूमरेट हो गया. तो एन्यूमरेट द इनडायरेक्ट टैक्सेस व्हिच हैव बीन सबज्यूम्ड इन द गुड्स एंड सर्विस टैक्स इन इंडिया. ऑल्सो comment on the revenue implication of the GST introduced in India since July 2017. Now this is the question of trend. ये क्वेश्चन आया है आपका इकोनॉमिक सर्वे से. ठीक है, इकोनॉमिक सर्वे को आपको अच्छे से पढ़ना होगा उस समय का. तो उसमें कहीं ना कहीं एक ट्रेंड उन्होंने रेवेन्यू से रिलेटेड बताया था. ऑल्सो कमेंट ऑन द रेवेन्यू इंप्लीकेशन ऑफ द जीएसटी इंट्रोड्यूस सिंस जुलाई 2017 में, जुलाई में इंट्रोड्यूस हुआ. ठीक है, 1 जुलाई 2017 से जीएसटी इंप्लीमेंटेशन स्टार्ट हुआ. उस जीएसटी इंप्लीमेंटेशन के बाद से रेवेन्यू जो है स्टेट्स के, उस पर कुछ ना कुछ इंप्लीकेशन पड़ा ना. तो उस 1.5-2 साल में जो इंप्लीकेशन पड़ा, उसका ट्रेंड जो था वो कहीं ना कहीं करंट अफेयर्स में चल रहा था. ये क्वेश्चन जो है जुड़ा हुआ है किससे? करंट अफेयर्स से. डेली न्यूज़पेपर में कुछ ना कुछ आर्टिकल चल रहे थे. हर दिन 2-3 दिन में कोई ना कोई आर्टिकल आ रहा था कि भाई स्टेट्स को कॉम्पनसेशन देना है, इतना रेवेन्यू पे उसके इम्पैक्ट पड़ रहा है, इतना सेंट्रल के रेवेन्यू पे इम्पैक्ट पड़ रहा है, ओवरऑल जीएसटी कलेक्शन इतना हुआ है, इतना एक्सपेक्टेड था, इतना डेफिसिट में गया है. ये सारी चीजें, ये है कि ट्रेंड वाली बात. सो ऑल दिस ट्रेंड you must keep in mind. So now ये क्वेश्चन ऑब्स्क्यूर हो गया. Now this question is obscure because this is the question of that time. Okay. Now the next is the this ये ओके हो गया क्वेश्चन. ठीक है, ये थोड़ा सा फैक्चुअल हो गया बिकॉज इन्यूमरेट करने को बोल रहे हैं. तो 3-4 टैक्स एटलीस्ट you need to enumerate, not all the taxes. Now explain the rationale behind this is 2020 question. Explain the rationale behind the
Goods and Service Tax Compensation to State Act of 2017. How has COVID-19 impacted the GST Compensation Fund and created new federal tension? Now, this is also current affairs question, because just because of the once in a century pandemic, COVID pandemic, the manufacturing process and the whole supply chain got disrupted. And because of the disruption of the supply chain, the whole taxation structure of India, or specifically the GST collection of the government, just got destructed, wholly destructed. So because of that, the first thing, that the overall collection of government reduced, first thing. Second, that the compensation, because if the production process is not happening, there is a lockdown, and after that, even the India is consumption based economy, and consumption was not taking place, production was at halt, all these things were happening, means consumption is not taking place. If consumption is not taking place, then taxes are not realized. Okay, and taxes are not realized, then cess will not be there. If cess will not be there, the GST compensation cess won't have any money. But states are, seeking money every time, because there was a clause in that. So the rationale behind, first it is asking what are the rationale behind the compensation. Rationales are very simple, because GST is destination based taxation, and those industries, those states in which industries have been situated were facing problem, because if Gujarat is worked for 60-70 years to proliferate the industries and to incentive the manufacturing industries, but after the production, the good is going to some other state and the consumption is taking place in that state, then the GST will be realized in that state. That consumption-based state will get the GST, and the production process is taking place in Gujarat, and Gujarat is not getting any tax. So here, this is the main trouble. This is the main trouble which states are facing. So the rationale behind the Goods and Service Tax Compensation to State Act is this. This is the simple rationale, because states have apprehension that the revenue will fall. In that case, if that will go below 14, then central government will provide the difference from the GST compensation cess. That's the one thing. So that was then. And how the COVID-19 impacted GST compensation fund? It impacted because taxation was not there. Then how the cess will come? So there was no taxation, and it created new federal tension. Federal tension means there was a tension between the central government and the state government, because state governments which had the shortfall, those were not having the 14% revenue increase rate, revenue growth rate, were asking for money. But central government was lacking fund, because the production process was not going on, and GST compensation cess was not, filled by, because cess cess was not there. So central government was short of funds, that's why not able to provide money to the states. But according to Act, central must provide. But due to COVID pandemic, there was a shortfall, and that's why there was the tension between the central and the state government. That is the federal tension. Okay. So that's the question came in the 2020. Okay. So these are 4 questions. Now tell me, इन चारों में से कौन सा क्वेश्चन मुश्किल लगा आपको? बताइए. बोलो. फर्स्ट वन थोड़ा सा है. कौन सा वाला? फर्स्ट वन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा था. कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, सिंपल. देखो, एक्सप्लेन द रैशनल. रैशनल इज वेरी सिंपल. वी डिस्कस द रैशनल. रैशनल तो मैंने बताया ना कि जो प्रोडक्शन जहां पे हो रहा है उसको टैक्स नहीं मिल रहा है, ठीक है, तो वो तो रैशनल सामने दिख रहा है. कॉम्पोजिशन आया क्यों, अभी तो पढ़ा थोड़ी देर पहले, तो वो पार्ट तो इजी है ना. ये जो फेडरल टेंशन वाला पार्ट है, एक्चुअली ये टफ नहीं है, ये करंट अफेयर्स से रिलेटेड है. बिकॉज अगर आप न्यूज़पेपर उस समय पढ़ रहे होते 2020 में, तो आपको पता होता कि ये फेडरल टेंशन आ रहा था. अभी जब आप पढ़ रहे होंगे न्यूज़पेपर, तो आपको पता रहेगा कि क्या फेडरल टेंशन आ रही है, क्या इशू है. ठीक है, तो टफ नहीं है वो, बस वो करंट अफेयर्स से थोड़ा जुड़ा हुआ है. ओके, चले. यस सर. वेरी गुड. ये यूनुस की आवाज थी, आई नो. ओके. यस, हाँ, यूनुस की नहीं थी, किसकी थी? मेरा ही है सर. तुम्हारा ही है ना. हाँ, चलो, एक बहुत अच्छी और प्यारी सी चीज पढ़ते हैं, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू. दैट इज द फाइनेंस कमीशन. हैव यू हर्ड
The name of Finance Commission? Give me a quick reply. Yes, sir. Very good. Yes. Can you please elaborate Yes. what is Finance Commission? Yes, yes, तो बढ़िया है, but अब elaborate करो जल्दी से. Now, hello. So it's concerned with taxes. सर प्रेसिडेंट अंदर ये कॉन्स्टिट्यूट के है. क्या है? एक एक करके बोलो. So it's concerned with tax distribution. जो मुझे पता है. स्लाइड खुला हुआ है, उसको देख के नहीं बोलना है. नहीं सर, वो नहीं देख रहे हैं. तो फिर रीड कर सकते थे. सर फाइनेंशियल रिलेशन इंडिया और स्टेट के बीच में ये करने के लिए इसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया था प्रेसिडेंट के द्वारा. हाँ बेटा, ये सब देख के बोल रहे हो स्लाइड से. मुझे स्लाइड हटाते ना तो क्वेश्चन पूछने से पहले, पर मैं एक चतुर शिक्षक नहीं हूं. कोई बात नहीं, चलो. फाइनेंस कमीशन बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी है, बहुत सिंपल सा है, बहुत सिंपल है. देखो कुछ नहीं है. क्या करना है, पहले इस स्लाइड को मत देखो, पहले मुझे देखो. हमने अभी देखा कि ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू वाज देयर. इन ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू, लेट मी टेक यू टू द स्लाइड ऑफ ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू, then you will understand. Yes. अब देखो, ये दिख रहा है ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू. इस ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू को चेक करो. 50% tax is direct tax. The remaining 50 is nearly indirect tax. Okay. 50-50, nearly, it is approx data. Now you can see that all the direct tax is levied by central government. All the direct tax is levied by central government, means almost 50% of the all tax is blatantly and directly going to the central government's domain, because corporate tax is collected by central government. Indirect that income tax is also collected by the central government. Income tax department works under the central government. So almost 50% is directly going to the central government. Customs duty go to the central government. Excise duty, union excise duty also go to the union government. Okay, remaining 27% GST is there, which is somewhere distributed between the state GST and the central GST. Means states get a very low amount of money in terms of the gross tax revenue. So out of this 100 gross tax revenue, states only get 20, even not 20%, nearly 15-16% money of the gross tax revenue goes to the states. Okay, means the main tax money goes to the central government. Okay, this is what you need to understand. Okay, now the majority of money is going to the central government. State governments don't have very much money because they only have SGST and some other kind of taxes on some excise duty on the alcohol and all those things. So from that they earn some money, but remaining the main the overall amount of money is with the central government. That's why the central need to devolve money to the state government. Keep in mind, the central need to give money to the state governments from the money which it received in terms of taxation. Okay, because the huge amount of money, the most of the money goes to the central government. So it is the responsibility of central government to give some of the money to the states. Okay, because it collects so much tax as compared to the state government. This point you understand? Good. Now come again. Here comes the Finance Commission. Here comes the Finance Commission. Okay. Now, what is Finance Commission? Just understand this. The Finance Commission is a constitutional body that determines the method and formula for distributing the tax proceeds between center and the state and among the state as per the constitutional arrangement of the present requirement. बहुत ही simple है बच्चों.
बहुत ही सिंपल है। क्या है? बहुत सारा टैक्स जो है, ह्यूज अमाउंट ऑफ टैक्स जो है वो किसके पास जा रहा है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जा रहा है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जितना भी टैक्स कलेक्ट हो रहा है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट टोटल जितना भी, उस टैक्स का कुछ परसेंटेज जो है, दैट परसेंटेज स्टेट मस्ट डिवॉल्व और मस्ट गिव टू द central government must give to the states. If central government is collecting 100 rupees tax in one financial year, then out of that 100 rupees, central government must devolve a particular percentage to the states. Okay. Now that percentage, like what percentage central government need to devolve to states, will be decided by the body called Finance Commission, which is written in the slide. Okay. How much money is central government must devolve to the state government is determined by the Finance Commission. So Finance Commission is a body which will decide how much money central will devolve to the state government. Did you get my point? Okay. If 100 rupees are earned by the central government in terms of in terms of taxes, then out of that 100, how much money central will give to the states? Okay. So first thing, it is a constitutional body, means it is written in the constitution. Second thing is it determines the method and formula for distributing the tax proceeds between center and state. Okay, center will receive the money in terms of tax, it will devolve the money to the states, so that money will decide. Okay. Under Article 280, because it is written in the constitution, that's why Article 280. The President of India is required to constitute a finance commission at an interval of 5 years or earlier. Okay. So under Article 280, the President of India, so who constitute the Finance Commission? The President of India, this is a fact, is required to constitute Finance Commission at an interval of 5 years or earlier. Means in 5 years, President of India constitute the Finance Commission or earlier. In case if President thinks there is a need to constitute a Finance Commission, even before the 5 years, President can constitute the Finance Commission. But the normal way or the normal procedure is, normal custom is, the normal rule is to constitute a finance commission in the period of 5 years. Okay, so who constitute? President of India. The 15th Finance Commission was constituted by President of India in 2017. So since independence, 14th Finance Commission have worked. Recently, the 15th Finance Commission was constituted in 2017. Okay. Under the chairmanship of N.K. Singh. N.K. Singh is economist, and N.K. Singh के अंडर जो है chairmanship में finance commission बनाई गई, body है finance commission. Its recommendation will cover a period of 5 years from 2021 to 2526. Okay. So what will finance commission do? Finance commission will give recommendations that how much money central should devolve to the states. Okay. That recommendation will be given by finance commission to the government. Okay. Will be constituted by the President of India, written in the Article 280. And the recommendation of Finance Commission will be usually valid for the upcoming 5 years. कि 21, 22, 25, 26 तक वो जो devolution का formula बताएंगे वो valid रहेगा. अभी रुको थोड़ा सा और एक slide और दे. इस slide में सब समझ में आ जाएगा. पहले इस picture को देखो. How the booty is divided. How the booty is divided. God bless you. Formula that decide a state share. देखो, weightage in 14th Finance Commission. इस cycle को देखो. After that, weightage in the 15th Finance Commission. Okay. This is the second thing. ऊपर वाले से पहले नीचे वाले को देखो. State share in divisibility pool. State share in divisibility pool. Now, what is divisibility pool? Divisibility pool means if central government is earning 100 rupees from taxation. If central government is earning 100 rupees from taxation, then out of that 100 rupees, how much money? If central government is earning 100 rupees from taxation, central government, then how much money central will devolve to the states? Okay, that money is divisibility pool. Okay, for example, look at this graph. The graph below: 11th Finance Commission, 12th Finance Commission, 13th, 14th, and 15th. All the finance commissions have given their recommendation that this much money the central must devolve to the states. But 11th Finance Commission said that 29.5% means if central government is earning 100 rupees, then 29.5 rupees out of that should be devolved to the states. Okay.
After that, 12th Finance Commission, they said 30.5. Then they increased in the 13th, 32%. Then 42% in the 14th Finance Commission. So the previous Finance Commission, the 14th Finance Commission said that divisibility pool should be 42%. Means if central government is earning 100 rupees, then 42 rupees out of that 100 rupees will be given to the states. Currently, the 15th Finance Commission, which recently gave its recommendation, which are valid till 2026. Okay, in previous slide we said that until 2026, the recommendation of 15th Finance Commission will be valid. So the 15th Finance Commission said the 41%. The 41% will be the divisibility pool. Means state share in divisibility pool is 41%. If central is earning 100, then 41 rupees will be devolved among the states. ये समझ में आ गया? ये बात समझ में आई नहीं? जल्दी से respond करो. Yes, sir. Very good. Intelligent हो गए यार तुम लोग मेरे साथ रह रहे. Very good. Next. नहीं पहले से इंटेलिजेंट थे तुम लोग. अब आओ ऊपर वाले में. अब ये समझ में आ गया कि 100 रुपीज में से 41 रुपीज स्टेट्स को देने. ये तो समझ आ गया. बट अब 41 रुपीज को स्टेट्स के बीच में भी तो डिस्ट्रीब्यूट करना है ना. भाई किस स्टेट को कितना देना है? सबको बराबर तो नहीं दे सकते ना. तो किस स्टेट को कितना मिलेगा? लाइक डिफरेंट स्टेट हैव डिफरेंट देयर डेमोग्राफिक डिविडेंड एंड ऑल दोस. पॉपुलेशन इज डिफरेंट, एरिया इज डिफरेंट. ओके, सो ऑन व्हाट विल बी द बेसिस on which the states will get their money? Okay, for that is called the horizontal devolution. Keep in mind there are two devolution. First is the vertical devolution. Central government is giving money to states. That is called vertical devolution. Okay, because it is penetrating down. So this is called vertical devolution. So vertical devolution is 41%. Vertical devolution is 41%. Now this 41 will be distributed among states. That will be called as horizontal devolution. Okay, so the graph below is showing you. Graph below, this red line is showing you the vertical devolution. Vertical devolution is 41. And this graph above is showing you the horizontal devolution. How money will be distributed, how this 41% will be distributed among the states. Okay, so here we have a comparison. Comparison is that the weight in the 14th Finance Commission, तो 14th Finance Commission का फॉर्मूला इसमें है, 15th का इसमें है. ठीक है, तो फर्स्ट पहले 14 का देखते हैं. तो 14 में उन्होंने ये कहा इस सारे स्टेट्स का वेटेज अलग अलग होगा और हर स्टेट का जो वेटेज होगा वो किस पे डिपेंड करेगा? इन 5-6 कैरेक्टरिस्टिक्स पे डिपेंड करेगा. ठीक है, और इन 5-6 कैरेक्टरिस्टिक को अलग अलग वेटेज दिया गया. ऑल दिस कैरेक्टरिस्टिक, ऑल दिस एट्रीब्यूट आर असाइन्ड सम वेटेज. Okay, so each and every state will score something, and according to that score they will be provided the money from out of that 41. Okay, now these are the attributes. Now first attribute is the population. First we will check in the 14th Finance Commission the population. Population is 27.5%. 27.5% means the state which have a huge population. Okay, by सबकी पॉपुलेशन कम ज्यादा हो सकती ना, तो इस ओवरऑल डिवोल्यूशन में 27.5% वेटेज किसका था? उस स्टेट की पॉपुलेशन का था. तो स्टेट को काफी अच्छा खासा वेटेज दे रखा था. 27.5% would be given to the weightage would be given to the population. Second is the area of the state. So if इससे ये समझ आ रहा है कि अगर स्टेट की पॉपुलेशन ज्यादा है तो उसको पैसा ज्यादा मिलेगा, जरूरत भी ज्यादा पड़ेगी, सिंपल सी बात है. तो इस पॉपुलेशन को यहाँ पे 27.5% वेटेज दिया गया. Now the second is the area. If area is larger, then they will get more money. So 15% weightage is given to the area. Forest and ecology, 7.5%. Okay, and the income distance, this is the 50%. This is the income distance. Now what is the income distance? Income distance is just very simple. Okay, one person is earning 100 rupees. Second is earning 90. Third is 80. One is earning, then continuously there's a decrease in the income, and the last person is earning 0. Okay, so now the person who is earning highest money will get the least money. समझ गए? It is the concept of equity. It is a concept of, sorry, not equity. It is a concept of kind of equity. Means the person who already have huge sum of money will get least money. Okay, जो सबसे अमीर स्टेट रहेगा ना उसको सबसे कम पैसा मिलेगा. In terms of income, in terms of per capita income, प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटा इनकम. तो जिस स्टेट की पर कैपिटा इनकम बहुत ज्यादा रहेगी उसको सबसे लीस्ट पैसा मिलेगा. उसको सबसे लीस्ट पैसा मिलेगा. डिड यू गेट माय पॉइंट? और जो सबसे गरीब रहेगा ना इनकम में,
उसको सबसे ज्यादा मिलेगा। तो इनकम डिस्टेंस क्या शो कर रही है? इनकम डिस्टेंस शो कर रही है कि जो सबसे हाई है उससे आप जितना ज्यादा दूर हो उतना आपको पैसा ज्यादा मिलेगा। तो इनकम डिस्टेंस को सबसे ज्यादा क्या दिया गया? वेटेज दिया गया। 50% वेटेज इज गिवन टू द इनकम डिस्टेंस। ओके, so these five, 27.5, 7.5 and all these things collectively 100%. Okay, so they these are the weights in the 14 पे आ गया पॉपुलेशन। एरिया 15 to 15 ही है, मतलब पॉपुलेशन का वेटेज कम हो गया थोड़ा। 7.5 से फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी 10 पे आ गई। मींस फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी बिकॉज क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो इनको ज्यादा आप क्या देते हो? वेटेज दे रहे हो। फिर आ रहा है आपका इनकम डिस्टेंस को 45 पे ले आए हैं, डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस को 12.5 पे लाए हैं और 2.5 टैक्स एफर्ट्स को लाए हैं। ठीक है, टैक्स एफर्ट्स मींस आप टैक्स कंप्लायंस में कितना इजी रख रहे हो मामला, दैट वुड बी योर टैक्स एफर्ट्स, तो उनको इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है। तो ये अभी करंट है, इसको आपको याद रखना है। ठीक है, इसको आपको याद रखना है और इसको समझ भी लो थोड़ा सा। वेटेज इन द 15th फाइनेंस कमीशन एग्जैक्टली है क्या? एरिया को उन्होंने पॉपुलेशन को क्या किया? रिड्यूस किया। मतलब पॉपुलेशन के वेटेज, दे हैव रिड्यूस द वेटेज ऑफ पॉपुलेशन। व्हाई? बिकॉज पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग। ठीक है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, ऑल्दो द रिप्लेसमेंट रेट से नीचे आ गया इंडिया। रिप्लेसमेंट रेट क्या होती है? रिप्लेसमेंट रेट इज द रेट कि इफ योर फर्टिलिटी रेट इज equal to the replacement rate. Replacement rate is a kind of fertility rate. 2.1 is the replacement rate. Means if every couple have 2.1 kids. Okay, 0.1 can't be a kid, but you can say that 10 couple have 11 kids. Okay, 10 couple have the 21 kids. Okay, ये गणित समझ में आ रहा है क्या? हवा से जा रहे हैं। 2.1 is the replacement rate. Replacement rate पॉपुलेशन की बात कर रहा हूं मैं। पॉपुलेशन की बात ये है कि हर कपल को अगर 2.1 बच्चा होगा, 2.1 बच्चा किसको? हर कपल को। तो हर कपल को जब 2.1 बच्चा होगा ना, तो उस कंट्री की पॉपुलेशन कांस्टेंट रहेगी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? हर कपल को अगर 2.1 बच्चा होगा तो उस कंट्री की पॉपुलेशन क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। दैट इज रिप्लेसमेंट रेट। सो फर्टिलिटी रेट शुड बी 2.1. दैट इज रिप्लेसमेंट रेट. Now, if your country's fertility rate is above replacement rate, if 2.1 is the replacement rate and your country's fertility rate is 2.5, it means your population is increasing. Because at fertility rate, at replacement rate, your population is constant or stagnant. Okay? At fertility rate, at the replacement rate. But if your fertility rate is above replacement rate, it means your population is increasing. And if your fertility rate is below replacement rate, then your population is decreasing. Recent data said that India's fertility rate is just below the replacement rate. It means in upcoming time, India's population is going to decline. This is the official data. In the upcoming time, India's population is going to decline. Just below, I think 2.1 is the replacement rate and India's fertility rate is 2.07, I think. Okay. So it is just below, but still it is below. Although India have any, census is not very, इंडिया में सेंसस बहुत ज्यादा इफिशियंसी से होता नहीं है, बट स्टिल जो ऑफिशियल डेटा है वो ऑफिशियल डेटा है। तो 2.1 इज द रिप्लेसमेंट रेट एंड इंडियाज फर्टिलिटी रेट इज 2.07, आई थिंक, जस्ट बिलो द रिप्लेसमेंट रेट. दैट्स व्हाई इन द अपकमिंग टाइम इंडियाज पॉपुलेशन इज गोइंग टू डिक्लाइन. पॉपुलेशन ग्रोथ इज गोइंग टू डिक्लाइन. ओके, दैट्स इट, फर्स्ट थिंग. नाउ नेक्स्ट थिंग इज दैट if some state is increasing its population just because, or not making any policy over its population because they will get more money if they will have more population, because population have very considerable weightage, 27.5 in the 14th Finance Commission. So no states were taking care of their population and not trying to reduce the fertility rate and all those things. They were not taking that seriously. Okay, but population is a big issue now. Okay, so they reduced it to the 15% only. Means now the weightage of the population has been reduced to 15%, first thing. So states started taking care of their population, first thing. Second, area 15%. Area is important because area zyada rahega, so definitely you need to take care of that and you need more money. So you will be provided that money. 2.5% tax efforts. Tax efforts were not there previously, but this is added tax efforts. Okay, so the states governments are taking care of the tax authorities and all those things, and then the tax efforts would be there. So tax efforts का एक कॉलम डाला गया 2.5 का, तो स्टेट्स के उस एफर्ट्स को एक्नॉलेज किया है फाइनेंस कमीशन ने.
45% इनकम डिस्टेंस तो है ही, आपकी पॉवर्टी है तो आपको मिलेगा ही, अभी तक भी हाईएस्ट है. 12.5% is the demographic performance. 12.5% for the demographic performance. This is really important. Now understand what is demographic dividend first. Demographic dividend is your population. First thing, your population, which is which is assets rather than liability. Means you are preparing your population, or you are giving your population a better life. For example, just take into consideration a single point: the mortality rate, the infant mortality rate or child mortality rate. Children are dying just because there was a lack of institutional delivery. They were dying at the time of delivery at home and all those things. Institutional delivery were reducing the child mortality rate. So now if the state government is trying really hard to reduce the child mortality rate, okay, under any scheme, that Janni Suraksha Yojana or Matru Bandhan Yojana, or there's so many schemes, under any scheme, if a state is working really good to reduce the child mortality rate or the maternal mortality rate, then definitely that state need to be acknowledged. That is the acknowledgement under the demographic performance. Okay, means the state is working good in the field of the demographic performance. First thing. Second, for old age, like for example, state government has. Yes. Sir, repeat. Demographic performance. वापस बताओ. Yes, sir. डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस का मतलब है कि हाउ द स्टेट इज टेकिंग केयर ऑफ इट्स पीपल. ओके, स्पेसिफिकली those who are vulnerable people, those who are gullible people, because they need care, like child mortality. Okay, first thing is the child mortality. Children's, or at the time when the pregnant women were at their home and they were not coming to institution or not coming to hospital for the delivery and all those purposes. That's why government came with some scheme, Janni Suraksha Yojana and Matru Bandhan Yojana. If you are coming to hospital for the delivery purposes, then you will be incentivized for 5,000 or 6,000 rupees or something like that. Some cash incentive was there. That ultimately increased the institutional delivery after the incentive. Okay. Before giving this incentive, the rural people were reluctant to go to hospitals. Okay, and there was a possibility that if the delivery is taking place at home, then the mother or there was no immaculate environment and all those things were not involved. They were using the customary techniques and all that. So there was a possibility that women who is giving birth or the children who's coming to this world, both were in danger. ठीक है, उनको कहीं ना कहीं एक डेंजर रहता था, कभी मदर की डेथ हो जाती है, कभी चिल्ड्रन की डेथ हो जाती है, बिकॉज हर टाइम के साथ तो कॉम्प्लिकेशंस जो होती है बढ़ती जा रही है. सो वो जो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट है स्टेट का, वो रहेगा, बढ़ा रहेगा. अगर वो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी नहीं होगी, घर पे करेंगे, तो उसको कम करने के लिए वो वहां गवर्नमेंट स्कीम चला रही ना कि जननी सुरक्षा योजना है. आप अगर उसको वहां से वहां लाओ तो एम्बुलेंस का एक्सपेंडिचर भी हम देंगे, वहां पे जब डिलीवरी होगी तो आपको पैसा भी हम देंगे, उसके बाद आपका चेकअप का भी हम करेंगे कुछ. तो 5 से 6 हजार रुपए का कुछ स्कीम चलता है. उससे क्या होता है, कैश इंसेंटिव मिल रहा है. कैश इंसेंटिव मिलने से क्या होता है कि इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी प्रमोट हो रही है. वो प्रमोट हो रही है तो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, मैटरनल मतलब मदर की डेथ, और चाइल्ड मोर्टेलिटी या इन्फेंट मोर्टेलिटी जो चिल्ड्रन की डेथ हो जाती है विद इन 1 ईयर में या फिर वाइल डिलीवरी, वो सब क्या हो रही है, रिड्यूस हो रही है. इसका मतलब दैट पर्टिकुलर स्टेट वर्कड इन दिस डायरेक्शन. दैट इज मींस डेमोग्राफिक अपने डिविडेंड को बेटर करने के लिए उन्होंने क्या किया, दैट्स द डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस. उन्होंने अच्छा काम किया, चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट को कम किया, इन्फेंट मोर्टेलिटी को कम किया, मैटरनल मोर्टेलिटी को कम किया. सिमिलरली ओल्ड एज पॉपुलेशन नीड केयर, फॉर देम दे आर डिस्ट्रीब्यूटिंग सम एड. वो उनके लिए व्हील चेयर्स डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, उनको होम केयर डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, उनके घर पे जाके चेकअप्स चल रहे हैं, उनके लिए कुछ और चीज कर रहे हैं. तो अपने एल्डरली पॉपुलेशन का भी क्या किया, टेक केयर किया, उनको फ्री में मेडिसिन दिया या उनके लिए कैंप्स लगाए एक्स्ट्रा. तो आपने उनके लिए मेडिकल में क्या किया, अच्छा काम किया. डेमोग्राफिक डिविडेंड को आपने क्या किया, बढ़ावा दिया. तो एक बार वहां पे क्या किया, डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस अच्छा किया. तो ये सारे परफॉर्मेंसेस जो है उनके बेसिस पे आपको क्या होता है, हर स्टेट को क्या हो रहा है, एक वेटेज दिया गया है. तो आप इसमें काम करोगे तो आपको एक अच्छा खासा क्या मिलेगा, डिविडेंड उसमें मिलेगा. तो दो स्टेट्स हु आर परफॉर्मिंग वेल उनको अच्छा मिलेगा, जो नहीं कर रहे अच्छा उनको कम मिलेगा.
ठीक है, तो this demographic dividend, demographic performance and tax efforts became part of this weightage in the 15th Finance Commission. Okay. Yes, sir. So this is the, so this picture above is for the horizontal devolution, and this picture below is the for the vertical devolution. Okay, so there are two devolution, and both, like vertical devolution and horizontal devolution, both are decided by the formula decided by the Finance Commission. Okay, the government accepted the 15th Finance Commission's recommendation to maintain the state share in the divisibility pool 2 of taxes to 41%. State central government ने accept कर लिया Finance Commission की report को for the 5-year period starting for 2021 to 2122 से 26 तक जाएगा, मतलब 5 ईयर तक डिविजिबिलिटी पुल 41% ही रहेगा. ठीक है, फिर नया फाइनेंस कमीशन बनाएंगे, वो रिकमेंडेशन देगा तो वो 26 से आगे तक चलेंगे. ठीक है, द कमीशंस रिपोर्ट वर टेबल्ड इन द पार्लियामेंट. कीप इन माइंड, इसकी टेबल पार्लियामेंट में टेबल होती है. कमीशन की जो रिपोर्ट होती है, मोस्ट ऑफ टाइम सेंट्रल गवर्नमेंट एक्सेप्ट all the recommendation of finance commission most of time. Okay, and when this report is tabled in parliament, in case if government is not accepting any of the recommendation of finance commission, then what government will do, whenever the report is tabled in parliament, then government should also come up with the explanation that this is the reason why we haven't accepted the recommendation of the finance commission. So there is an accountability involved because it's a constitutional body. If you are not accepting its recommendation, you need to explain it to the central, you explain it to the parliament. So there is an accountability mechanism. The commission gives formula for both vertical devolution and horizontal. This is for vertical, this is for horizontal. Vertical devolution means devolution of taxes of the union to states. Horizontal devolution means allocation between the states. Very simple. Did you get my point? ये समझ में आया? Yes, sir. फाइनेंस कमीशन बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी है. Yes, sir. नाउ ये एक क्लास देख लो अभी, फिर बंद करते हैं. ये वही है, मैंने वही, बस उसका एक अलग ग्राफ है ये. ठीक है, रेवेन्यू शेयरिंग फॉर्मूला इन द 14th एंड 15th फाइनेंस कमीशन. ठीक है, ये 14th का था, ये 15 का था, बस उसी का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, नथिंग. ठीक है, 15% पॉपुलेशन, ये पूरा बस. ओके, आपको जिससे आई थिंक ये ज्यादा बेटर लग रहा है, ये इजी है याद करने के लिए. Yes, sir. तो इससे याद कर लेना, ये लगे तो ये कर लेना. ठीक है, ब्लैक मनी पढ़ना है? No, sir. No, Yes, sir. कल पढ़ेंगे. equivocally everyone is saying no sir. Okay, I think that's it for today. कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए. Should I call the names? सर GST कैटेगराइज कैसे करते हैं? 0% और 3%, 5%, 12%. वो कैटेगराइज करना तो वो जीएसटी काउंसिल का काम है, उसमें अपना कोई रोल नहीं है. ठीक है, बस वो है कि कमोडिटीज जो कि इनएविटेबल है, जो बहुत ज्यादा मतलब जिनके बिना लोग सरवाइव नहीं कर पाएंगे, उनको थोड़ा कम टैक्सेस के उसमें रखा जाता है. बिकॉज वो कहीं ना कहीं एक कॉमन पब्लिक के लिवलीहुड पे एक क्वेश्चन मार्क रहता है. अगर आप मिल्क पे 28% जीएसटी लगा दोगे तो कैसे चलेगा? समझे? तो वो जीएसटी काउंसिल करती है वो काम. सर किस बेसिस पे है? बेसिस ही तो बता रहा हूं. बेसिस यही है कि कॉमन मैन की लाइफ पे वो क्या असर डाल रहा है. पहला, ठीक है, फर्स्ट बेसिस इज दैट लाइफ ऑफ कॉमन मैन, फर्स्ट थिंग फ्रॉम द पीपल्स पॉइंट ऑफ व्यू. सेकंड, फिस्कल पॉइंट ऑफ व्यू. फिस्कल पॉइंट ऑफ व्यू मीन्स आप गवर्नमेंट अपना जो टैक्स, जो अपना क्या बोलते हैं, फिस्कल मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी चेक करना है ना उसको, तो उसको मनी चाहिए, फंड चाहिए, अपने डेफिसिट्स चेक करेगी. अभी डेफिसिट्स पढ़ेंगे अपन 2-3 मतलब कल ही पढ़ेंगे. तो डेफिसिट चेक करेगी कि हम कितना डेफिसिट में चल रहे हैं, हमारा रेवेन्यू रिसीट्स कितना है, हमारा रेवेन्यू डेफिसिट कितना चल रहा है, हमारा कैपिटल अकाउंट में कितना डेफिसिट चल रहा है. उस हिसाब से हम अगर अगले 1 साल में इतना टैक्स लगाएंगे तो हम उन डेफिसिट्स को कवर कर पाएंगे. वो सारी कैलकुलेशंस वो रखते हैं अपने दिमाग. ठीक है, ओके सर. एनीथिंग एल्स?
सर जीएसटी का अगर मेंस आंसर राइटिंग हुआ तो ओल्ड रिजिम और न्यू रिजिम का कुछ डिफरेंशिएट करना पड़ेगा क्या? डिपेंड्स करेगा ना, डिपेंड करेगा क्वेश्चन कैसा है। अगर वो कह रहा है डिफरेंशिएट करने को तो करना है, ठीक है, क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा। अब उस क्वेश्चन में जो हमने देखा था अभी, उसमें उसने कहा, क्या कहा, उसने कहा कि भैया आप यही बताओ कि जीएसटी का इंट्रोडक्शन का जरूरत क्यों पड़ा। तो उसमें हमको बताना पड़ा ना कि प्रीवियस टैक्स रिजीम में क्या इश्यूज थे, उन इश्यूज को रिजॉल्व करने के लिए जीएसटी को लाना पड़ा। तो उसमें पूछ रहा है तो बताना है, नहीं पूछ रहा तो नहीं बताना है। अभी आपको ओल्ड टैक्स रिजीम से कोई मतलब नहीं, अभी आपको करंट टैक्स रिजीम को दिमाग में रखना है। ओल्ड टैक्स रिजीम में जो इश्यूज थे वो हमने डिस्कस कर दिए, बट ओल्ड टैक्स रिजीम क्या था, कैसे टैक्स लगते थे, उन सब में अब नहीं जाना है, दैट इज ऑब्सक्यूर, ठीक है, वो अपने लिए आप काम करेंगे। वेट यस, ओके स्वाति। यस सर। और बताइए। That's it. So we'll end our session here. Keep studying and keep going. Okay, everyone. Good night. Take care. थैंक यू सर। थैंक यू सर, गुड नाइट। Thank you, sir. Good night. सर एक क्वेश्चन जस्ट आपसे पूछना था सर। Yes, yes. Please. सर ऑप्शनल का सर इकोनॉमिक्स कैसा है? ऑप्शनल का इकोनॉमिक्स कैसा है? अच्छा है, बहुत अच्छा है। ऑप्शनल इकोनॉमिक्स, you want to opt economics as optional? सर वही सर सोच रहा था, मतलब कौन सा ये रहेगा, क्योंकि दूसरा इसमें थोड़ा इंटरेस्ट तो आ रहा है, लेकिन मतलब पता नहीं कितना हार्ड होगा आगे जाके हुई। नहीं, just do one thing, go and check the syllabus. Okay, check the syllabus. If you are अगर इंटरेस्ट आ रहा है तो इकोनॉमिक्स में बहुत मतलब सिलेबस लेंथी है, बट करते हैं, अचीवेबल है। ओके, तो गो एंड चेक द सिलेबस, बिकॉज अभी हम जो पढ़ते हैं बहुत जनरलिस्टिक चीजें पढ़ते हैं। इन दैट यू नीड टू रीड सो मेनी थिंग्स विच आर लेस, थोड़ी कम इंटरेस्टिंग है, बट थोड़ी स्टेटिस्टिक्स भी आएगा, थोड़ा काफी कुछ है। तो जस्ट गो एंड चेक द सिलेबस। ओके, post that. If you face any doubt, then you can mail me, then I will write you there. Okay. ओके सर, Okay, take care. आपका मेल आईडी पीपीटी Yes, या फिर कहीं पे मिलेगा? Okay. My mail ID is, I think, already mentioned. You can write it. तो आप एक बार। हाँ सर, It is YPJ YPJ 009 009 @ हाँ सर, yahoo.com. Okay. I think my mail ID is mentioned in one of the PPT. That money PPT. Okay. You can check Okay. there. Okay. Take care. Good night. यस सर, थैंक यू सर।